Hello, girls and boys. How's it going? Hopefully, you can hear me. Let me know if you folks can hear me. Okay. Let me know if you can hear me. Okay. All right. Furkan. Hello, sir. Hello. Hi, Imran. How are you doing? How's it going? Good, good. Chetan says, yes, sir, we can. Thank you, Chetan. अरे कहाँ गया ढक्कन Anyways, all right. क्या हाल चाल? Okay. Nigator. Hello, sir. How are you? I'm doing very good, sir. How are you doing? Aryan. Hey, Aryan. Good to see you. Artham, big fan, sir. Thank you, Artham. How are you? Hey, Nanki, how are you doing? That's my daughter logging in. Good to see you, Nanki. Okay. Um, who else? Who else? New surrounding. मैं यूएस में हूं ना यार. आई एम इन अटलांटा. आई एम इन अ होटल. तो ये वो बैकग्राउंड है. आज शाम को निकल रहा हूं. I'll be back home over the weekend. So that's why this new background, man. Okay. Who else? What is the topic of today's Q&A? Nothing, man. I just wanted to have a conversation. We do this every 2 weeks. You guys know that. It's Ask Me Anything, AMA. So whatever you want to ask, go ahead, ask, and I shall answer. How are you? Yeah, I'm doing very good. Thank you, Ranki. How are you doing? Please answer my reply my question, Shivani Jha. Shivani, question क्या है? रुको ढूंढता हूँ. हाँ, ओके. अच्छा, ऐसे वाले टेक्निकल क्वेश्चंस है तो कम ऑन द चैट and I will answer. I will paste the link here. Okay, I've pasted the link. So come and join here. Okay. And then we can talk. Good. All right. Okay, let's see. Let's look at some questions. Is web dollar? Yes, some questions here. Log on to the chat, come on the camera, and then we can talk. Okay. Cool. Okay, let's go. Hey Imran, how are you? I'm good, sir. I'm good. How are you? Good, good, very good. Honey, Bali, do you have any question for me? Or you just came to talk to people? I just came to talk to you and talk to people. And I just wanted to ask, are you going to join KubeCon India this time? यार आई हैवंट सबमिटेड अ पेपर. आऊंगा तो टॉक देने आऊंगा, अटेंड करने तो नहीं आता मैं. तो वो सबमिट नहीं किया मैंने, अभी टाइम नहीं मिला मुझे. आई डोंट नो, इज इट स्टिल ओपन? तो नहीं अब तो हो गया, अब तो क्लोज हो गया. क्लोज हो गया. हाँ तो हो गया. या आई कांट हियर यू इमरान, यू ब्रोक अप. now can I hear me now? या नाउ आई कैन. तो वही मैंने भी अप्लाई किया था बट मेरा हुआ नहीं. बट लेट्स सी, अगर मेरी कंपनी स्पॉन्सर करती है तो मैं जाऊंगा. वो बात कर रहे हैं अभी, शायद उनकी तरफ से मैं जाऊं, अदरवाइज
नहीं जाऊंगा Yeah. So I didn't do the CFP. So then I'm not coming. Good. I did apply for CF and I did apply for C1 Navigate as well. Let's see अगर Okay. वहाँ होता है नहीं होता है Is लंदन that वाला London? yeah yes London Okay. in Okay. Yeah, that'll be a good one. Yeah. yeah Okay. Cool. All right. Rutupan. Hello sir, myself Subramanian More. I just finished my 12th और मुझे एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के वर्ल्ड में अभी जस्ट पैर ही रखे हैं मैंने। तो अभी Mm-hmm. मैं सोच रहा था कि एप्लीकेशन मोबाइल डेवलपमेंट में मुझे जाना है। Mm-hmm. तो मेरा क्वेश्चन यही है कि मैं लैपटॉप कौन सा लूँ सर, मैकबुक लूँ या फिर गेमिंग लैपटॉप लेना चाहिए कॉलेज के लिए? Imran, do you want to answer that question? You're better qualified to answer that. आउट से अगर भाई बजट अलाउ करता है तो ले लो मैकबुक ही लो दैट्स द बेस्ट थिंग मतलब उसका बैटरी बैकअप वगैरह और सब चीज़ों में ओके बहुत बेस्ट रहेगा और कम है तो फिर यू कैन गेट एनी लैपटॉप मतलब मिनिमम 8 GB 16 GB रैम होनी चाहिए और नहीं सर, नॉर्मल ग्राफिक्स बजट कार्ड का होना तो चाहिए तो टेंशन नहीं है, बट अगर AIML फिर मैक मुझे लो मैक टास्क अगर रन करने हो तो रन हो जाएंगे ना? यस M4 ओके Air ले लो मोर देन इनफ आई थिंक ओके। एंड सर मुझे अभी स्टार्टिंग में लैंग्वेज कौन सी चूज करूं? मैं जावास्क्रिप्ट चूज करूं? इमरान, क्या चूज करे भाई? इसका सर अभी मुझे भी आइडिया नहीं है बिकॉज मैं तो टेक्स हूँ सर बट ये है क्योंकि कि मुझे फर्स्ट यू हैव टू फंडामेंटल्स पता है सी प्लस प्लस के, हम्म और पाइथन भी मैंने 9th में की थी। यार अभी तो 2-3 ट्राई करना। अभी क्या है, ओके जो कर सकता है कर। अभी तो अभी इतना सोचने की जरूरत नहीं है ना। ठीक है सर, जावास्क्रिप्ट में स्टार्ट कर देता हूँ। जावास्क्रिप्ट शुरू कर और एक हाँ, कंपाइल्ड लैंग्वेज जरूर करना। कौन सी? ढंग कंपाइल्ड लैंग्वेज, भले जावा हो जाए, डॉट नेट हो जाए, रूबी हो जाए, कोई भी, बट एक ओके प्रॉपर कंपाइल्ड लैंग्वेज अच्छे से आनी जरूरी है। तो वो ओके। जरूर करना, भले अभी मत करो, बाद में करो। अभी तो 2-4 चीजें सीखो, ट्राई करो यार, जो अच्छा लगता है वो करना बाद में। हाँ सर, अभी 3-4 टाइम महीने बहुत दो है। लैंग्वेज हाँ, हाँ, कॉलेज स्टार्ट होने में, वो गोलैंग प्रोसेस भी होने अच्छी है में अगर बहुत गोलैंग टाइम है। गोलैंग कर लो। काफी सारे प्रोडक्ट्स ओके गोलैंग में लिखे हैं। गोलैंग ठीक, थैंक यू सर, मेरा यही क्वेश्चन था। मैं ओके ज़्यादा कूल, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका। थैंक यू। थैंक्स। गुड इवनिंग सर। हाँ जी, एक सेकेंड यार यार, जितने लोग चैट में क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, तो वो ये लिंक ज्वाइन करो। आई पुट द लिंक हियर अगेन। लिंक ज्वाइन करो, कैमरा ऑन करो, तभी जवाब दूंगा मैं। चैट पे नहीं जवाब देते हम। इधर आ जाओ, बात करते हैं। हाँ जी। गुड इवनिंग सर। तो हाँ प्राइवेट हाँ चैट जी, में भी एक क्वेश्चन मैं जवाब ही नहीं दूंगा गुड चैट में। इवनिंग सर। लाइव का पॉइंट ही ये है ना कि लाइव बात करनी है। वो तो फिर लिंक्डइन हेलो। पे। अरे हाँ, रुक जा यार, 1 मिनट, 1 मिनट रुक जा। नहीं मेरी आ सॉरी रहा सर, सॉरी। हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ यार, यूट्यूब लाइव का पॉइंट ही है ना कि लाइव बात हो पाए। इधर भी चैटें करनी है तो क्या मतलब है करने का? फिर क्यों टाइम पास कर रहे हैं हम लोग? तो सवाल अगर जवाब चाहिए तो वेबकैम ऑन करो और चैट पे आओ, इधर लाइव पे आओ, अदरवाइज मैं जवाब नहीं दूंगा। ये हमारा रूल है। हाँ जी, अब बोलिए। सर मैं फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ सर, पास आउट स्टूडेंट। ठीक है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग पास किया सर। सर फिलहाल तो मैं कोर्सेस ही एक्सप्लोर कर रहा था सर, हम्म डिवॉप्स हो इसमें और डेटा साइंस में। स्टिल आई एम कंफ्यूजिंग सर, विच कोर्स शुड आई सेलेक्ट? सो सर व्हाट हैव यू आपका डन? वीडियो देखा था सर। व्हाट यस हैव यू सर, डन नाउ? क्या आपने कंप्लीट किया अभी? कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। खत्म होगी 4 साल? यस सर। अभी तो उसमें क्या पढ़ा? वो 4 साल में क्या किया? अभी क्यों कोर्स की जरूरत पड़ रही है? सर वो 4 साल में सिर्फ इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गई सर। अरे हाँ, लेकिन कुछ ओके, समझ गया। सर मैंने डेवलपमेंट गाइड किया तो किया उस लास्ट ईयर में। किस लास्ट हाँ ईयर मैंने डेवलपमेंट किया था, इसमें इंटर्नशिप ये करे थे सर स्टार्टअप कंपनी में। हाँ, ओके। सर वो आपका वीडियो देखा था मैं, व्हाई शुड यू नॉट डू डिवॉप्स। हम्म सर उसमें डिवॉप्स में मेरे को आपसे गाइडेंस होना था सर,
कैसे DevOps करना चाहिए, आपकी गाइड होना था सर। तो सवाल क्या है? DevOps के बारे गाइड हो में गया सर। मतलब? अरे क्या सवाल क्या है तो बाबा? DevOps गाइडेंस के लिए ही सर, DevOps शुड आई स्टार्ट DevOps एज ए फ्रेशर? मैं मुझे क्या कैसे बताऊं यार, मैं कर ले अभी किस बेसिस पे आंसर दूं ना? शुड आई स्टार्ट मतलब कर। क्वेश्चन क्या है? 4 साल आपने क्या किया है, आपको किस चीज की नॉलेज है, क्या करना चाहते हो आगे, कुछ तो बताओ। ऐसे मैं क्या बोलूं अभी? सर मैंने मतलब ये ऐसा है कि मैं आज शाम को बिरयानी खा लूं क्या? खा ले भाई, पसंद है तो खा ले, और दोपहर को ही खाई है तो मत खा, 2 दिन बाद खा लेना। मतलब ऐसे देखो ना, क्या क्या कुछ आपने पास में ट्राई किया है, किस चीज़ में इंटरेस्ट आया था, नहीं आया था। सीधा सर डेवऑप्स में तो कोई DevOps फ़ायदा में नहीं है, इंटरेस्ट, बजट। क्यों? क्योंकि पैसे देते हैं इसमें, इसलिए? नहीं सर। हाँ तो DevOps का लास्ट कल मैंने DevOps के एक एम्प्लॉय से बात किया था सर। DevOps हाँ में उन्होंने बोल रहे थे, मैंने इंटरव्यू क्रैक किया है, 4 राउंड्स रहते हैं उसमें। तो तो कैसे स्टार्ट कर रहे हैं सर आप? आपकी गाइड चाहिए थी सर, कैसे सर DevOps स्टार्ट करें? वो तो वीडियो बना के रखे है ना चैनल पे, वो देख ले। कल आपने एक बात की, डेवऑप्स में तो वही। कल आपने किससे बात की जिसने डेवऑप्स क्लियर किया है? आज बात करोगे जो iOS डेवलपर है, परसों बात करोगे जो कुछ और कर रहा है। ऐसे थोड़ी होता है ना यार। सो गाइस हैंग ऑन, इफ यू आर ट्राइंग टू एंटर, अभी वी ऑलरेडी हैव 10 पीपल, तो वेट फॉर सम टाइम, लेट पीपल मूव आउट एंड देन यू विल बी एबल टू ज्वाइन। 10 का लिमिट है इसमें, ठीक है? सो 10 से ज्यादा लोग नहीं आ सकते, अभी 10 हैं ऑलरेडी। तो वेट फॉर सम टाइम एंड देन ट्राई लॉगिंग इन अगेन, तो हो जाएगा। हाँ फुरकान, ऐसे नहीं होगा ना यार। थोड़ा आपने 4 साल जो पढ़ाई की, किस में किया इंजीनियरिंग आपने? सर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। शाबाश, बढ़िया। उसमें क्या पसंद आया, क्या नहीं पसंद आया, कुछ तो बताओ। सर वेब डेवलपमेंट ज्यादा इंटरेस्टिंग दिखा था सर। हाँ फिर? फिर एग्जॉस्ट इसमें इंटर्नशिप भी किया था सर मैंने, स्टार्टअप कंपनी में, डेवलपमेंट फील्ड में। हाँ फिर क्या हुआ? फिर अचानक छोड़ना पड़ा सर इंटर्नशिप। ओके। उसमें एग्जॉस्ट एग्जॉस्ट भी हो गया सर उसमें, तो ज्यादा इंटरेस्ट भी चला गया सर हमारा वेब तो आप डेवलपमेंट की फील्ड में। DevOps। आप एक काम करो, अगर आपको डेवऑप्स के बारे में पता करना है, मेरे चैनल पे जाके देखो, वहां पे रोड मैप्स वगैरह सब दिए हुए हैं। वो देख के फॉलो करना शुरू करो। यूट्यूब पे बहुत मटेरियल अवेलेबल है, बहुत सारे लोगों ने कोर्सेज बनाए हैं। वो देखो, कोई महंगा कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है, अभी शुरू तो करो। ओके 1-2 लाख वाला कोर्स कोई मत सर। खरीदना, किसी का भी मत खरीदना। इंस्टीट्यूट, सर मैंने इंस्टीट्यूट भी एक्सप्लोर किए थे सर, हैदराबाद में बहुत महंगे इंस्टीट्यूट है। शुड आई जॉइन दिस इंस्टीट्यूट और नॉट? मैं क्या कह शुड रही आई हूँ, गो ऑनलाइन? सुनो तो सही। मैं क्या कह रही हूँ अभी, सुनो तो सही भाईजान। मैंने अभी क्या बोला कि कोर्स मत ज्वाइन करना अभी। अभी के लिए बहुत फ्री मटेरियल अवेलेबल है ऑनलाइन, वहां से शुरू करो। ठीक है? ओके, थैंक्स। क्या भी लगा। ओके, या रियाज, गो अहेड प्लीज। या है सर। मैं मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस है एज ए डेवऑप्स इंजीनियर। ओके। पिछला एक्सपीरियंस मेरा नॉन टेक्निकल था। आई चेंज माय स्ट्रीम। अभी आई वांट टू स्विच, बट द थिंग इज दैट कि ये जो 2 साल का एक्सपीरियंस है, विद इन दिस 2 years there's actually 1 year of actual working experience. So in this startup company which I'm working currently has actually deployed, I mean, started giving me the real project thing related to DevOps. Now my question is that कि मेरे जो resume है, I'm applying multiple on multiple platforms, बट मेरा जो रिज्यूमे है उसके अंदर जो प्रोजेक्ट वाला पार्ट है इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। दूसरी चीज मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि व्हाट शुड आई डू इन द रिज्यूमे पार्ट
जिससे it will look better, and also सेल्फ रनिंग के पर्पस से कि प्रोजेक्ट बिल्डिंग के अंदर व्हाट शुड आई डू, इफ यू कैन गाइड मी ऑन दैट अभी आपने जो काम किया है, 1 साल 1 1.5 साल जो भी किया है, उसमें क्या किया है? पॉइंट। सर उसके अंदर डॉकर डिप्लॉयमेंट होता है, जैसे मॉडल लर्निंग प्लेटफॉर्म है उसका पूरा डॉकराइज डिप्लॉयमेंट हो गया, उसका कुबरनेटिस के ऊपर डिप्लॉयमेंट हो गया, ये पार्ट हो गया। हम्म, देन बैकअप स्टोरेज जो है उसका बॉल बैकअप से मैंने पूरा ऑटोमेट करके उसका क्रोन जॉब ऑटोमेट करके वो वाला पार्ट हो गया। हम्म, उसके बाद मैं एंसिबल प्लेबुक्स जो है उसका गिटलैब सीआई के थ्रू उसका पाइपलाइन जनरेट करके उसको डिप्लॉय किया। हम्म, ये सारे पार्ट अभी तक मैंने कर रखे हैं और वो मैंने अपने रिज्यूमे में मेंशन किए हैं सर। ओके, लेकिन अभी भी आपको लग रहा है कि प्रोजेक्ट सेक्शन वीक है? यस सर, आई फील लाइक पर्सनली बिकॉज फेयर कंप्लीट इनफ। ऑटोमेशन वाला सीआई/सीडी वाला पार्ट आई फील लाइक लर्निंग भी बहुत ज़रूरी है उसमें, जो मेरा आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल इनफ कि इतना बहुत फेयर है। इनफ। So, see, there are two things. One is the actual work that you do, and the second is what you put in your resume. Right? Now, it is not just about putting in it in your resume, because that you can see 1,000 resumes and copy some projects and put them. That is not the problem statement, करेक्ट। right? Because the moment you put something, you should have enough answers and enough experience to be able to explain that. Otherwise, how will या you fare in the interview, right? So I think राइट। your problem statement is not what do I put in your interview. Your problem statement is what other kind of projects I can work on so that I can get the experience so that I can put them in the resume, right? फेयर। So on my channel there is a video on couple of project ideas. You can take some inspiration from that, but see, the thought is very simple. You've covered Docker, you've covered Ansible, right? या Now do something on infrastructure as code. Pick one cloud, cover that area. Okay. Then including infrastructure as code, you can extend that to monitoring, logging, alerting also. Okay. ओके। Then do something on serverless. Lambda functions पकड़ लो, उसका कोई एक प्रोजेक्ट बना दो, तो अलग अलग एरियाज कवर हो जाएंगे ना आपके। अब एक ओके प्रोजेक्ट में सर। नहीं आएंगे, दैट इज ओके, बट एटलीस्ट 5 प्रोजेक्ट में 5 6 एरिया कवर हो जाएंगे, तो दैट इज गुड इनफ। Okay, so ओके look at that video, you'll get some ideas, and then for each of these areas, you showcase your projects as well. ओके ठीक है? थैंक यू सो मच। Okay, thanks. थैंक यू। All right, Mayur, go ahead, please. अरे कहाँ गया चला ही गया अहमद? गो अहेड। हाँ यार, बाकी लोग कैमरा ऑन करो अपना, फिर बात करेंगे। हाँ जी ओम, बोलिए। हाँ सर, रिसेंटली मैंने एमसीए कंप्लीट किया है। ओम, आई कांट हियर यू, आवाज नहीं आ रही। हेलो 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 हेलो। नहीं यार, कांट हियर यू। Okay, anybody else wants to come on camera till then? हेलो हेलो। ओम बहुत वीक है आवाज, हेडफोन्स वगैरह कुछ लगा के देखो, ट्राई करो। ओके मानिक, हाय मानिक। Yes, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग। Sir, actually, I'm working right now in a non-IT company, and I've heard your live chat previous also ओके। that you told that we need to see the videos, free videos right now. Actually, I want to join the DevOps, so I want to study the DevOps in a deeper way. So, can you please, because I have seen that there are a lot of videos, lot of teachers who upload their videos, so that makes confusion. So can you suggest whether we go in a one, there is a one video in which whole DevOps is there, there is a video in Linux networking, different. So which videos we should go first?
Can you please suggest? So, Simanik, it's like this, a kid comes to you and says, I want to prepare for JEE. What subject should I study first? What is your answer to that? One by one subject. One subject at a time. And how many do I have to study? All of them. Which video should I watch? Whatever makes sense to you, right? Okay. Because let us say I have some videos which teach something, Imran has something, Om has something. Everybody is teaching from their own experience, right? Which one do you In want? your experience, I don't which recommend. video? I don't recommend videos because it doesn't matter. Okay. Because see, now Muhammad Imran has 1-2 years experience. When he teaches something, he will teach it differently. I have Okay. 25 years experience. When I teach something, it will be very different. What do you understand? You might understand his video, you might relate to me, you might relate to somebody else. And all of us are doing a good job. All content creators are trying to create the best content that they know of. Mm-hmm. Right? It is not that this guy doesn't know anything or I don't know anything. It's not that. We are all trying to teach at our level of expertise. What matters is what level are you at today and which one do you resonate with? Maybe you like Imran's style of teaching more than you like mine. I might be a better teacher, but you like his style more. तो उसके वीडियो देखो, मेरे मत देखो, राइट? तो इसका एक आंसर नहीं होता है, बिकॉज Okay. आपका आज एक्सपीरियंस कितना है, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका लिनक्स स्ट्रांग है लेकिन डॉकर वीक है, तो वो वाले वीडियोस देखोगे. इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड पे कभी काम नहीं किया है और वो अगर कोई बंदा 3 साल से पढ़ा रहा है तो वो देख के मतलब नहीं है, राइट? तो आई कैन नॉट रिकमेंड यू कि अरे इसके अब अभिषेक वीरामल्ली के वीडियो देख लो. इट डजंट वर्क लाइक दैट. सब बंदे Okay. अच्छी बना रहे हैं वीडियो, किसी की भी देखो, 2-4 के देखो, जो अच्छा लग रहा है उसको फॉलो करो. किसी का पढ़ाने का स्टाइल पसंद आएगा, किसी का नहीं आएगा, किसी का कोई टॉपिक ज्यादा अच्छा होगा, किसी का नहीं अच्छा होगा. तो इसका स्टैंडर्ड आंसर नहीं है भाई. Okay. Okay. पॉइंट ये नहीं है कि वीडियो किसके देखने हैं. पॉइंट ये है कि मुझे क्या 10 चीजें सीखनी है, कितने डेप्थ में सीखनी है और उसका आउटपुट क्या है, क्योंकि मुझे नौकरी लेनी है. तो मैं वीडियो जी में जी. पीएचडी नहीं करनी है, तो मैं नौकरी में लेनी है. नहीं वो सर, एक्चुअली कंफ्यूजन ये था ना कि कुछ जो है वो वीडियो सारी एक साथ बना देते हैं, कुछ अलग अलग, तो वही मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन था तो कि क्या एक कंफ्यूजन डेवऑप्स के है नाम. यार? क्या कंफ्यूजन है? सबका अपना तरीका है ना बनाने का. जी. कंफ्यूजन क्या है इसमें? आपको जो अच्छा लगता है वो ले लो ना. ठीक. अब आप बिग बाजार जाते हो, राइट? 1000 टाइप की चीजें हैं, सारी जरूरी थोड़ी लेनी. यस सर. जो शर्ट टी शर्ट पसंद आएगी वही लोगे ना. ऐसे थोड़ी कि यार यहाँ तो इसने 50 कलर रखे हैं, ये क्या बात हुई यार, मुझे सारे लेने पड़ेंगे. ऐसा थोड़ी होता है. हम्म. जो पसंद है, जो अच्छा लगेगा, जो बजट में आएगा वही लोगे. यस सर. अब आपको आज येलो अच्छा लगा, मुझे ये कुछ ज्यादा ही ब्राइट है, इतना ब्राइट है नहीं है. तो देयर इज नो स्ट्रेट आंसर टू दैट यार. इफ यू आर एक्सपेक्टिंग कि ये बंदे के ये 3 वीडियो देख लो और आपकी 25 लाख की नौकरी लग जाएगी, तो आई एम सॉरी, इतना नहीं नहीं सिंपल सर, वो तो समझ रहा हूँ मैं आप. नहीं होता ना. तो मैं आप बोल ये फिगर सकता हूँ आउट कुछ? करो कि क्या पढ़ना है, कितना आपको आता है, क्या डेल्टा है, व्हाट इज द एक्सपर्टीज यू वांट टू बिल्ड, और उस एक्सपर्टीज के वीडियो देखने मत शुरू करो. उस एक्सपर्टीज अच्छा में काम करना शुरू करो. वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए किसका वीडियो हेल्प करता है वो देखो. सर, मुझे अभी कोर जावा और ये सब HTML SQL ये सब तो आता है हम्म नॉर्मल. हम्म बाकी अभी मैं लिनक्स की देख रहा हूँ सर, वीडियो मैं देख रहा हूँ वही अभी. कह रहा हूँ यार, मैंने अभी क्या बोला कि वीडियो देखने के लिए वीडियो मत देखो, राइट? लिनक्स अगर आप कर रहे हो, लिनक्स के असाइनमेंट्स उठाओ बिना कोई वीडियो देखे. ओके. उसमें शेल स्क्रिप्टिंग उठा लो. अभी शेल स्क्रिप्टिंग में 4 लाइन का स्क्रिप्ट लिखना है जिसमें स्ट्रिंग को रिवर्स करना है. कैसे करना है नहीं आता मुझे, उसका वीडियो देख लो.
तो कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वीडियो देखो, प्लेलिस्ट खत्म करने के लिए वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सीखोगे कुछ नहीं। और इंटरव्यू में कोई ये नहीं पूछने वाला कि अरे इसके सारे वीडियो देखे क्या, वो नहीं कोई पूछ रहा ना, उस पे इवैल्यूएशन नहीं है। इवैल्यूएशन ये है कि ये प्रॉब्लम है, ये सॉल्व कर सकते हो कि नहीं, है ना? वैसे अप्रोच से देखो, ठीक है? ठीक। ओके, ऑलराइट। हेलो अरे गुरुजी भी है। नमस्कार गुरुजी। हेलो सर। हेलो। हेलो कैसे हो? लॉन्ग टाइम। हाँ नहीं, यहाँ बहुत गर्मी है यार लंदन में। गर्मी तो है, वो तो है। 27 डिग्रीज है, 28 है टू बी ऑनेस्ट। हाँ, एंड वहां का 28 फील्स लाइक 35 ऑलमोस्ट। हाँ नेकेड है यार, बहुत ही या naked। या ओके, ऑलराइट गाइस, कैमरा ऑन हेलो। करो, बात करेंगे। हाँ सो हेलो सर। अभी जिन्होंने बात किया उनके लिए एक छोटा सा सजेशन है। जैसे सविंदर ने बोला था, सिर्फ वीडियो देख के इट्स लाइक यूट्यूब चैनल देख के खाना पकाना। जब तक आप खाना पकाओगे नहीं तब तक स्वाद नहीं आएगा। तो माय सजेशन वुड बी watch a video, try to understand what they are trying to teach, and then shut down the video and try to implement it. And when you whenever you implement, everything becomes easy. Move on to a next subject. When you face error, write down the notes how you solved it and make it public so that other people can consume. That way, you will learn, you will document, and this is how the industry works. Just don't do it for namesake copying, pasting commands that won't help you in the long run. ऑलराइट, Hello. who's next? Hi, Am I Rishikesh. audible, sir? Perfect. Good. हेलो। Yeah. Yes, you're audible. ओके। Good. यस सर, एक्चुअली मेरा नाम ऋषिकेश है और मैं बैंकिंग डोमेन में एज अ प्रोडक्शन सपोर्ट काम कर रहा हूँ। एक्चुअली सर मुझे प्रोडक्शन सपोर्ट में ही कैरी ऑन करना है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि मैं सिर्फ एसक्यूएल पे ही काम कर पा रहा हूँ अभी। तो मुझे लिनक्स और मॉनिटरिंग टूल्स भी सीखने हैं, पर मैं जब जब सीखने की कोशिश करता हूँ तो मैं स्टक हो रहा हूँ बहुत बार। Like I have tried almost like hundreds of times, बट फिर भी मैं स्टक हो रहा हूँ। लाइक रोज करता हूँ फिर भी कुछ दिमाग में आता है, फिर से हट जाता हूँ। मैंने ट्राई किया पर नहीं हो पा रहा है, तो आप इस पे क्या सजेशन दोगे? Stuck हो रहे हो मतलब क्या हो रहा है? लाइक कभी कभी सर मन नहीं लगता, नहीं तो लाइक अभी मैं काम भी कर रहा हूँ तो कुछ और कुछ काम आ जाता है, या कुछ फैमिली कुछ लाइक कोई भी लाइक मतलब दुनिया में जितने भी मुश्किलें हैं मुझे लगता है मुझ पे आ रही है जब जब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फिर से। हाय, ये हुई ना बात, दुनिया में जितनी मुश्किलें हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं। यस सर। लास्ट वीकेंड मैंने इंडिया से यूएस ट्रैवल किया, हाँ हाँ। ओके, और दोहा से फ्लाइट थी, ओके। ओके। और आपको पता पिछले वीकेंड क्या हुआ दोहा में? पता है? नॉट सर। चल ठीक आई है गेस फिर। उन्होंने फिर से कैंसिल कर दी एक फ्लाइट क्योंकि देयर इज सम इशू। अबे बॉम्ब मारे थे सबसे बड़े वाले अमेरिका ने दोहा में ओ पिछले, ओके 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 ओके। तो आज तक नहीं यूज किए दुनिया में, कहीं वो डाल दिया उन्होंने। And mine was one of the last flights to take off from Doha before all of that happened. Right? तो मुश्किलें बड़ी रिलेटिव हैं, है ना? यस सर। मतलब, और वो 15 घंटे की फ्लाइट है, दोहा टू अटलांटा, 15 घंटे की फ्लाइट है। अब मैं तो फ्लाइट में बैठा हूँ, मेरा तो फोन ऑफ है, मुझे नहीं पता क्या चल रहा दुनिया में। या हाँ हाँ। ऑफिस वालों और घर वालों की बड़ी बड़ी है कि ये बंदा उड़ा नहीं उड़ा, अरे कहाँ पहुंचा, क्या हुआ। मैं मस्त पिक्चर देखता हूँ फ्लाइट में, मुझे नहीं पता क्या चल रहा है नीचे। हाँ तो जो मुश्किलें बोल रहे हैं ना, ये बहुत रिलेटिव होती है, राइट? हाँ हाँ। पिछले हफ्ते मेरे घर वालों से बात करते, ऑफिस वालों से बात करते, उनको लगा था गया बंदा। यस सर।
तो देखो, ऐसे लगता है कि हम जितना ज्यादा सोचते हैं उतना ज्यादा वो लाइक हैम्पर हाँ, करता है। अब आया ना लाइन पे। एग्जैक्टली इसके दो ही सॉल्यूशन है। एक हाँ सॉल्यूशन हाँ। ये है कि 3 महीने का छुट्टी ले ले और हिमालय पे ओके। चला जा, है ना। लेकिन वहां प्रॉब्लम ये आएगी कि कभी ठंड लगेगी, कभी नेट कनेक्शन टूट जाएगा, कभी यू नो वड़ा पाव खाने का मन करेगा तो मिलेगा नहीं वहां पे, मोमोज ही मिलेंगे, तो वहां भी मन नहीं हाँ लगेगा। हाँ। और 3 महीने की ब्रेक ले ली तो वापस आओगे तो पता नहीं नौकरी रहेगी कि नहीं रहेगी। या तो कुछ करना है तो यही भसड़ में करना पड़ेगा, यस सर। क्योंकि कुछ सॉल्व नहीं होने वाला भाई, सब चलता रहेगा। उसी में ही आपको टाइम निकालना पड़ेगा, अपने आप को फोकस करना पड़ेगा। पहले आधे घंटे से करो, फिर टाइम बढ़ाओ धीरे धीरे, क्योंकि ये सब तो चलेगा ही, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है ना। यू हैव टू फिगर आउट अ वे हाउ ओके। टू डील विद दिस, हम्म। है ना। और वो या तभी करोगे इफ यू नो कि मुझे ये क्यों पढ़ना है, क्योंकि मुझे अपस्किल होना है, क्योंकि मुझे जॉब चेंज करनी है या सेम जॉब में रहना है, या मुझे लाइफ में प्रोग्रेस करना है। अगर वो गोल क्लियर होगा तो ही ये सब करो, ओके। अदरवाइज बहुत इजी है ना, सबके पास काम है ना, या है ना। वेला तो कोई नहीं बैठा है ना दुनिया में, है ना। अभी ये यूट्यूब लाइव खत्म करके 2 घंटे के बाद मेरी फ्लाइट है, हम्म। वो देख पीछे सूटकेस रेडी है, पैकिंग, हाँ हाँ हाँ। रेडी है सब, राइट। यस। अभी क्यों कर रहा हूं मैं ये लाइव, और कोई काम नहीं है जिंदगी में, आराम से बैठ के शांति से घूम सकता था, कहीं अच्छी जगह खाना खा के आ सकता था ना। हम्म। क्यों कर रहा हूं ये, क्योंकि कमिटमेंट है कि हर काम सैटरडे काम लाइव करना होगा। है, लाइव होना है। वो कमिटमेंट है ना, करना है तो करना है ना, फिर उस पे चूचा नहीं है, राइट। और फॉर्चुनेटली फ्लाइट का टाइम ऐसे है कि वो 9:30 मैच हो गया, तो सुबह हम्म। उठ के पैकिंग कर ली, सब रेडी कर लिया, ऑफिस का काम खत्म कर लिया, सब कर लिया, अभी लाइव कर लो। तो जो काम करना है वो करना है ना, उस पे वो फिर करना है, इवेंचुअली वो होना है। अब करना ही है यार, वो कमिटमेंट है ना यार, वो खुद की कमिटमेंट है ना। नहीं करता लाइव तो क्या हो जाएगा, 2 लोग आके गाली मार देंगे कमेंट में कि अरे बोला था लेकिन किया नहीं, मुझे कुछ फर्क पड़ेगा। वैसे भी करोड़ों नहीं कमा रहा अभी यूट्यूब से, एक हफ्ता नहीं करूंगा तो भी नहीं कमाऊंगा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हम्म लेकिन इट्स द हैबिट, हम्म। राइट, विच यू सस्टेन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। लास्ट वीक नहीं हुआ लाइव बिकॉज 50K यूट्यूब सब्सक्राइबर मीट था, राइट। वो कहां से हुए Yep. 50K, ऐसे ही कर करके हुए ना हर हफ्ते। अगले 4 महीने Yes में sir. 100K करने हैं, ऐसे ही होंगे ना, एक दिन सडनली उठ के तो नहीं आएंगे ना। एक और एग्जांपल देखो, अभी लाइव पे 90 लोग हैं, मुझे 90 दिख रहे हैं, 90 लोग लॉग्ड इन हैं अभी। हाँ हाँ हाँ। और आज लाइव का मैंने नोटिफिकेशन 5 घंटे पहले डाला है, बिकॉज सुबह उठते ही मुझे रियलाइज हुआ कि यार ये लाइव हो सकता है, आज टाइमिंग मैच कर जाएगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज 5 घंटे के नोटिफिकेशन पे अभी 95 लोग हो गए, 100 लोग 90 आ गए हैं हाँ हाँ। 5 घंटे के नोटिफिकेशन पे। आज से 1 साल पहले मैं 4 दिन पहले भी डालता तो भी 20 लोग नहीं होते थे। I'm not saying I'm very awesome. Consistency. Understand what I'm trying to say? I'm saying Yes sir. each day, bit by bit, video by video, live by live, today it has got to a place where every second weekend, between 100 to 150 people are joining in. If you come to this channel 1 year later, 500 people will join every live. Why? Because I will Consistency. continue to do this bloody thing every 2 weeks. The video will keep coming in. 6 वीडियो में अटलांटा आने से पहले रिकॉर्ड करके आया था, उसके पिछले हफ्ते में बर्लिन में था डेवऑप्स कॉन के लिए, वो पता आपको। Yeah. लेकिन वीडियो मेरे हर हफ्ते आते रहे हैं, तो भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। Yes sir. इफ यू वर फ्रॉम द स्टार्टिंग, माय डॉटर वाज आल्सो इन द लाइव, शी पिंग्ड मी, आई रिप्लाइड टू हर, बिकॉज शी न्यू कि मैं ये 2 घंटे लाइव कर रहा हूं, मैं उससे बात नहीं कर सकता। But सो शी जॉइंड दिस जस्ट टू से हाय पापा, हाउ आर यू, आई लव यू। हो गया, एडजस्ट करेंगे ना लाइव,
जो इम्पोर्टेंट है उसके आसपास लाइफ एडजस्ट होती है। थोड़ा लंबा आंसर हो गया, लेकिन नहीं ठीक है सर, एक्चुअली नीड थी मुझे। हाँ, थैंक तो यू। दुनिया हेलो नहीं रहने वाली भाई। या तेरे को अगर कुछ करना है थैंक यू तो सर। करना पड़ेगा फाइट। यस सर, और एक्चुअली मैंने और आपकी एडवाइस भी फॉलो की है, जो आपने स्पिरिचुअलिटी को लाइक ये किया थोड़े दिन पहले मैंने आपकी वीडियो देखी, पोस्टर वगैरह बनाना वो मैंने किया है अभी स्टार्ट। तो लेट्स सी कैसे प्रोग्रेस गुड होता है मेरा। थैंक गुड। यू सर, थैंक गुरु, यू वांटेड टू से ऋषिकेश, समथिंग? हाँ हाँ जी, ऋषिकेश जी, बोलिए। आप ना यू। यस। आपका जो सीखना चाहते हो ना वो बहुत बड़ा टॉपिक रखोगे ना, हाँ हाँ। तो डिस्ट्रैक्शंस बहुत होंगे, राइट? जो सीखना चाहते हो उसको ऐसा रखो कि 3-4 दिन में या 1 वीक में सीख सको, ऐसा कुछ होना चाहिए। इफ यू पुट अप अ टॉपिक which takes you 1 month or 3 weeks, then it becomes very difficult. Set small goals and achieve the goals. Once you get into that habit of weekly goals or daily goals, then it will automatically. That's what exactly what Savinder is saying. I have या weekly goals, weekly goals. Then it becomes monthly goals and it becomes yearly goals. ईयरली And गोल। yeah, so that's how it is. Try not to have big goals, have small ones. That would be my suggestion. ओके ओके, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू। हेलो Or are you flying back from US? हेलो गुरु सर, हेलो सविंदर सर, हेलो हेलो, am I audible? Yes. Sir, hello. Yes, okay, thank you, sir. Hope you are doing both well. Hello, Savinder, you're on mute, sir. Savinder sir, you are on Oh, mute, I think. sorry. Is it Sam who's talking? Yeah, yes, I'm Sam, sir. Actually, I have some technical issue with my mobile. Okay, so Okay. also I'll buy one day that one. Okay. Okay. Actually, sir, I see your videos. Okay, when I get some time. Okay. Mhm. And I thought that you are the good channel who are spreading the good knowledge with the spirituality. Mhm. And I'm very happy to see that. Okay. Thank And you. actually, sir, actually, I have a few concerns. So I thought that you be the good person who can guide me. Mhm. About me, sir, I'm Sam. Actually, I completed my BTech degree in 2015. And Okay. later that, I spent my 5 years in competitive exam preparation. Hmm. Okay. Later, I didn't get any kind of like job, government job, which I was seeking for. Later, Okay. I moved to any corporate job. I got job in shipping industry, and I have been working with shipping industry in 6 years. It's been 6 years. I have been working in shipping industry. Okay. Despite I completed my graduation in BTech IT, and but it's in my mind of I am not okay doing my career in IT industry. Okay, down the line after 10 years, okay, I realized that I need to do something, okay, which I have which I have a lot of capabilities. I can do much in my field. Down the line, I used to see some AWS videos, and right now I am practicing the AWS videos also. I do also Linux topics, networking topics. I have been practicing for the 6 months. So, what would be my next course of action? What do you think? Actually, down the line, I have been feeling that okay. Uh, lot of time has been wasted since nearly 10 years now. I am starting my career in tech domain, so these things okay disturbing me a lot. Okay, whenever I do practice, but I keep myself motivated. Still something hinders me. So what do you think, how to cope up with these things, please, Guru sir and Savinder sir? So let me understand your question. So you tried a couple of years for the government UPSC or whatever, that didn't work out. Then you went into the shipping industry. You've been there for 5-6 years, right? Yes sir. And this is all non-IT stuff, Yes. right? And you've now, so because of all of this, you've crossed about 10 years of total time since you passed out, Yes right? sir.
is your question now, how do I get into IT? Is that the question? Yes, sir. Yes, sir. Actually, sir, I have been practicing, like AWS, Linux, networking for the past 6 months. Okay, but sometimes, some things determine like fear. Okay, so I have done a lot of I have done a bit late. Okay, to enter this industry. So will I survive in this industry? Because a lot of people progressed. Okay, in this field since 10 years they have been progressing. Okay, on their front, but I lagged a lot of in that compare. Hmm. So I'm just comparing. I don't need to compare. Okay, but वो रहता है ना सर दिल में मलाल कि Yeah, I भाई ये तो understand. सच ही है. I हाँ understand. सर, वो थोड़ा सर मैं काफी खुद को संभालने का कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा यार. वो तो हो ही जाता है थोड़ा. आप क्या तो हिदायत दे सकते हैं इस बार? सैम देखो, ऐसा है, सिंपल है यार. देखो 10 साल तो निकल गए हैं, यस राइट? सर, यस. और अगर कोई आपके साथ का बंदा 10 साल से आईटी में काम कर रहा है, तो उसका सैलरी भी ज्यादा है, उसका पोजीशन भी ज्यादा है, राइट? वो फैक्ट है. यस सर, यस सर. एंड इट इज बिकॉज ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लाइफ डिसीजन टेकन, राइट? वो सही थे गलत थे वो अलग बात है, वो छोड़ दो अभी. द क्वेश्चन इज आज के बाद क्या करना है, राइट? यस सर. दो ऑप्शन है. एक ऑप्शन ये है कि अगर आपको जहां मजा आ रहा है, इफ यू आर हैप्पी, इफ यू आर स्टेबल, एंड इज द मूव टू आईटी बिकॉज अरे वो बंदे ने गाड़ी ले ली, उसने घर ले लिया, मेरी गाड़ी नहीं आई, मेरा घर नहीं आया, अगर इसकी वजह से आईटी में मूव कर रहे हो, तो आई वुड टेल यू टू थिंक अ लिटिल बिट मोर हार्डर, राइट? बिकॉज सबका लाइफ अलग है, सबके सर्कमस्टेंसेस अलग हैं. If you're not happy what you're doing and that is why you're switching, that is a different thing. Yes, yes, sir. This is the latter one reason is responsible. Okay, I'm not happy with the current positions. Then if that is the case, and see, because you've spent 6 years in one industry, it's not a small time. So Yes, sir. think if something can be done, because you will lose all of this experience. It's basically starting from scratch, Exactly. right? Because इसको leverage करना आईटी में बहुत मुश्किल है, नहीं होगा, right? So before you Definitely. let go of 6 years, you should think really hard. Is it worth it? Starting from scratch again, I will lose 6 years experience. I have to start from scratch again. There will be a pain period. Am I ready for all of that? If you've Yes, sir. thought through Definitely. all of that, and if the decision is still that, okay, I want to do it, then the only thing to focus after that is you're developing your skill. Yes, sir. Yes, Because sir. you have to develop it at a speed which nobody else is developing it at, right? Because with 10 years of past experience, not real experience but aged experience, you also have to think what position you will get into. Nobody will hire you as a fresher now, right? Yes, sir. Yes, sir. So if somebody has to hire you as at least 5-6 years experience, you need to have that skill. You need to have showcase that thing done outside. You need to do some internship, some other experience from somewhere, contribute to open source, some other way of showing that you can be considered at a slightly higher experience. Or you should be willing to take a salary cut for the next 1-2 years until you reach to that point. So you should be ready for all of that and focus there. Because बाकी सब सोच के it will not help you. Yes, Only sir. one Yes. thing which will help you is what is my skill level today? How do I increase my skill level? And how do I decrease that delta of getting to the salary that I should be with the expertise that is required to get there? What is that delta today and how fast can I bridge it? Because when I bridge my skill delta, that will hopefully translate to bridging the income delta also. Yes, sir. Does it make sense? Yes, sir. Yes, sir. That's what you should focus on. बाकी छोटी मोटी फ्रस्ट्रेशन आएगी यार, वो तो सबको आती है. You have to deal with it. Yes, sir. Yes, sir. Yeah? Definitely, sir. Guru, do you want to add anything, sir? Sure, sir.
Guru sir, your points. Well, Savinder has covered almost everything. My suggestion is also be realistic. As it will be difficult. It won't be easy for sure. Because think from an employer's perspective. Yeah. Your age, you already being in a different domain, comes as a bit of negative, not totally negative. So you may have to apply to a lot of companies before you respond. So if normal, and my suggestion is, don't only go for companies which are software development only. Go for companies which are non. For example, you have worked in shipping, right? So you have a lot of shipping. Yes. Apply for companies like Yes. Mask, who are into containers, who are into like Mercedes or shipping. There are lots of shipping companies, Yes, sir. especially Yes, sir. Yeah. Netherlands-based companies and Norwegian companies and Scandinavian countries. Their shipping is a very Sir. big industry. Yes, sir. You Uh, you have a lot of knowledge, sir, Guru sir. Yes. Continue, please. yeah, so those companies have Indian. I assume you are based out of India, correct? No, sir. I'm in India. Yeah, okay, yeah, that's what I mentioned. So my suggestion is look at those companies which are into shipping and some domain knowledge which you have, and apply to those companies where you can say that I have this all this domain knowledge for 10 years. I want to become technical, so I can join at a role which is semi-technical, but at this domain, and slowly in that company grow into technical if that's what I want you to do. So don't only look at Microsoft or FANG. Your domain knowledge Okay. may be Okay. Yes. based, and you may not get the response you're after. But look at those companies which are. Remember, my own sister's son, my nephew, he works for ABB, which is a Okay. manufacturing company, but he's a cloud engineer there. So don't Oh, think that okay. software companies are the only companies which develop cloud and software and technical. No. Remember, ultimately every software is built for a business. That business does not have to be Exactly. software all the time. Yeah? Yes, sir. Yes. Okay. That's it from me. Yeah, that's a Okay, very sir. good point. Thank you. One more suggestion, Sam, based on what Guru said. One more thing I realized. Your experience in shipping, if you have worked with a software product which is used in the shipping industry, see if you can apply to one of those companies, pick up that product. If that can be converted to a product Okay. manager or a product owner sort of role, that also might leverage Okay. your experience. Okay. Okay, sir. Sir, that's a good point, sir. You just highlighted and advised me. Okay, sir. That can help me a lot. Okay. Yeah, yeah. Because that kind of experience is very hard to get outside. So think about that line also, not just pure, DevOps and all of that. That might not work for you. This area could be a better, get in for you. So Yes. I'll Yes. tell Yes. So that my experience will be counted over Yes, there. yes. yeah. Yeah, Guru, you Take were my saying something? example, right? Take my example. My first job was for a networking company, but I did not like it, so I moved to UK. And my first job for first 15 years, I was working for investment banks. And what happens is, with investment banks is, because of my domain knowledge of that business, I got good roles. So same is your software skill is only 20%, 30% only, or 40%, or even 50. But your domain knowledge, problem statements, and define, and you can become an architect. You don't have to be a developer either. You can become a product owner, or you can even become a good BA, Yeah. technical BA. Okay. You Okay. can make Okay. that. So don't only think in terms of developer, DevOps. No, there are lots of Okay. different. So look into that aspect and see what existing skill can be leveraged. Just don't switch. Okay. Switch Okay. is not the Okay. option. Okay. Okay? Sam, मेरे channel पे ना there is a video which is on how do you sorry
non DevOps roles in the IT industry. Have a look at that. That will also give you some ideas. It talks about these kind of roles as well. Okay, sir. I'll definitely go through it. Okay. ठीक है. Cool यार. Thank you so Okay, sir. much. Okay. All right. Hello. Luffy, Yes, sir. थोड़ा ये माइक थोड़ा नीचे का यार, तेरी शक्ल नहीं दिख रही. खूबसूरत चेहरा तो दिखा. Yes. हाँ, ये हुई ना बात. अब ठीक है? अरे बढ़िया. Okay, so hi everyone. Okay, I'm a bit nervous. Okay, so you can say I am here for some DevOps therapy. Like I want to know if I am on correct path or not. So like in 2023 to 2024, for around 1 year, I had an internship as a DevOps intern for the company based in US. It was a remote job, and due to some personal reason, I had to leave that company. And in 2024, and then I kind of got back myself and started my study. And now uh, I have completely finished my resume and all the basic, not basic, but the main area of DevOps, and I'm now applying for jobs. Surely there are no reply or callback, but I guess for that, I yeah last like few weeks back I found your channel and then that whole learn in public thing. So I know like it is very important to be on LinkedIn, have some presence there. It's basically like social media for corporate, and you have to be there to kind of exist in the corporate. And so I started doing whatever I'm doing. I'm now actively making some posts on LinkedIn and saying like, okay, I'm doing this, and creating some blogs on Hashnode and putting the link there. Right now, I'm working on my home lab. So I have my Kubernetes set up on my second PC, which runs as a home lab, and then to make it purposeful, I am using it as my media server or self-hosted softwares for you can say data privacy and safety. And my strong points are Linux, Kubernetes, and Docker. I'm more interested in infra part rather than What's your CI/CD. question, buddy? What's your question? ये My सब question बढ़िया is like, am I on the correct path? It's like the clock is ticking for me. I have to get a job, and it just it's kind of hard to sleep at night, not knowing whether I am doing everything right or not. When you don't get any calls or mails, and as a fresher, it's very hard. They rarely post job openings for fresher, and then high chances it can either be fake or internally filled. And my networking is very bad. Like I don't know much people. I have recently joined LinkedIn, so Okay. I just want to confirm Fair enough. I'm I'll on let right path. Yeah. me and Guru will not answer this question. Let Imran answer this question. He's more qualified to answer that question. Imran, छोटा सा background दे दे and answer this question then. Hi Luffy. So my name is Imran and मैं basically सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ एंड 2.5 साल पहले मैंने स्टार्ट किया था डेवऑप्स वगैरह और टेक वगैरह पढ़ना एंड गॉट अ रिमोट जॉब 3 months बैक. तो या आई वुड से यार to get like you have to like have a great presence as well. And for now like you are saying कि clock is ticking and अभी बहुत कि मुझे जॉब चाहिए तो अभी नहीं. यू आर ऑन द करेक्ट पाथ और ये सब आई डोंट थिंक सोचने का टाइम है. यू हैव टू लाइक फोकस ऑन गेटिंग इंटरव्यू कॉल्स. तो जस्ट फोकस ऑन लाइक व्हाट यू हैव लर्नड इन द पास्ट एंड उसको आप कैसे अपने रिज्यूमे में बेस्ट तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो. एंड देन लाइक बी एक्टिव एंड अप्लाई करो अपनी फेवरेट कंपनीज के पेज जाके उनके करियर पेज चेक करो, उनके ईमेल्स वगैरह निकालो, उनको करो. लाइक राइट नाउ आई विल सजेस्ट दैट. एंड अपना जैसे रिज्यूमे वगैरह है वो रिव्यू कराओ. लाइक आफ्टर द कॉल यू कैन कॉन्टेक्ट गुरु एंड सविंदर सर. ठीक है, तो अपना रिज्यूमे Hello. रिव्यू करवाओ एंड Hello. मंथली रिव्यू कॉल बैक आ रही है नहीं आ रही. सो यू हैव टू चेक दैट आई थिंक. एंड बाकी यू शुड मतलब आपको लिंक्डइन वगैरह पे एक्टिव रहना चाहिए था क्योंकि लाइक
नॉलेज होना एक अलग बात है, बट उस नॉलेज को दिखाने के लिए और लाइक उस नॉलेज को दिखाने का वो चांस मिलने के लिए भी वो बहुत ही एक अलग जॉब है। तो थोड़ा थोड़ा ट्राई करो नेटवर्किंग का, बट मैं ये कहूँगा कि अगर क्लॉक इज टेकिंग फॉर यू तो फोकस ऑन योर रिज्यूमे, योर प्रोजेक्ट्स। अगर प्रोजेक्ट्स अच्छे नहीं हैं तो प्रोजेक्ट्स बिल्ड करो। एंड यू सेड कि आपकी इंटर्नशिप थी, तो अगर आपने उसमें जितना काम किया है उसको एज एन एक्सपीरियंस यूज़ करो, तो आप टोटली फ्रेशर नहीं रहोगे। तो वो मैं कहूँगा। लाइक जॉब कॉल्स मिलना इतना मुश्किल भी नहीं है। मुझे मुझे कभी मुश्किल नहीं हुई पर्सनली, इफ आई टेल यू, क्योंकि मैंने हमेशा लाइक बहुत ही सिस्टमेटिकली, बहुत ही लाइक एक प्लान के साथ लाइक अप्रोच किया हर चीज़ को। तो प्लान करो कि एक महीने में रोज़ इतनी चीज़ें अप्लाई करूँगा, हर हफ्ते रिव्यू करवाऊँगा चीज़ें, क्या चीज़ वर्क नहीं करी उस पर फिर आप फोकस करो। हर महीने आप अपनी स्ट्रेटजी चेंज करो अप्लाई करने की, और साथ साथ पर्सनल ब्रांडिंग भी बिल्ड करते रहो। तो आई वुड से दिस इज, तो ये मैं कहना चाहूँगा। या लाइक एक ये बहुत बड़ी गलती मैंने कर दी थी स्टार्टिंग में कि आई थॉट लाइक ओके आई विल फर्स्ट गेट परफेक्ट ऑन माय लेवल, व्हाटएवर आई नो आई विल फर्स्ट गेट परफेक्ट एंड देन मैं लिंक्डइन पे स्टार्ट करूंगा कि हाँ डेली ब्लॉग लिखूंगा कि मैं तो इतना जानता हूँ, ये करेंगे। बट देन नाउ आई नो लाइक काफ़ी बड़ी गलती कर दी थी मैंने ये। इवन दो आई नो क्वाइट गुड थिंग्स, लाइक मैं लिनक्स यूज़ कर रहा हूँ 5 साल से एज़ अ माय मेन ओएस, माय डेली ड्राइव, एंड स्टिल मैंने आज तक अभी लिंक्डइन पे कुछ पोस्ट नहीं किया इसके बारे में। एंड इट्स लाइक हाँ, मैंने काफ़ी अच्छा सा चांस जो है वो मिस कर दिया। और अभी तो फ़िलहाल रेज़्यूमे के लिए प्रोजेक्ट भी मैंने थोड़े अच्छे बना रखे हैं, लाइक नॉट जस्ट बेसिक बट थोड़े ऐसे जो रियली प्रोडक्शन में हम यूज़ कर सकते हैं। रेज़्यूमे रिव्यूज़ के लिए मैंने कुछ लोगों को लिंक्डइन पे मैसेज किया था कि हेलो सर, आई केम अक्रॉस योर प्रोफाइल फॉर दिस डेवऑप्स, यू आर इन लाइक डेवऑप्स फॉर दिस मच ईयर, कुड यू प्लीज़ टेक सम टाइम एंड रिव्यू माय रेज़्यूमे। बट हाँ, कोई रिप्लाई आता नहीं है, एवरीवन जस्ट nobody like replies, so वो भी एक दिक्कत है। Yes sir। Your Yes sir। answers are too long. Okay, I'm going to cut you out. Keep your answers and views short, please. Ping me on LinkedIn. I'll review your CV. Okay. Yes sir, like okay। Okay. हाँ, Number मेरा हो two. गया सर। हो गया काम Number फिर फिर। two. नहीं नहीं Number two. Don't have any regrets. Never. Never put yourself down. Number three. Linux only is not a skill. It's just a meanings to do something. Yeah, it's like making rice only for biryani. Well, only rice is rice. It's not biryani, right? So you need to put a lot of masala and everything else as well. So, and don't create like, for example, blogs on Linux commands. It's not worth it. It's like telling the whole world I know how to cycle, but everyone knows how to cycle. Yeah, you're not doing something new. yes sir। चलो, ऑल राइट, थैंक्स यार। ओके, Maybe शिवाजी। yeah. Oh, हाँ जी। he's gone. No, he's gone. So what I wanted to say was only Linux, or I only know AWS Terraform. It Yeah, doesn't bite anymore. doesn't help. Yeah. All right. Shivaji, go ahead. Good evening, sir. Good evening. Sir, I am final year CSE student and currently working at a startup in my college itself as a backend engineer. And I chose Golang to write the complete backend infrastructure. I was trying to enter in the DevOps field. So I recently discovered KubeCon conference at in Hyderabad next month. So my doubt was to how can I take benefit of getting into the conference and make new connections, as I'm new in this field. So If you most go of to the my things. channel, there is a Yes, video sir. on how to network. In there, I cover this question. How do you approach a conference? How do you talk to speakers? What do you do? You'll get all the answers in that video. Okay? Okay, thank you, sir. Okay, cool. All right. Hey, Pravesh, how are you? Hello, sir. Long time no see. I Like know. five How are months. you doing?
Sir, pretty much great. Like, first of all, I want to introduce myself. My name is Pravesh. I'm a law school graduate, now into DevOps. So, sir, the past 5 months has been really nice to me. I have been selected as AWS Community Builder under containers category, and I have won some challenges also, some blog challenges, and I have good LinkedIn, Twitter. So, my question to you is simply, I am doing most of the things correct, like posting on LinkedIn, writing blogs, having a social presence, messaging recruiter, tailoring my resume. I tailored it yesterday and make it one of the best freshers resume. So I started going to careers page of websites, started applying there, but my I don't receive any emails, which is very quite common these days. So what other things I can do to have to get calls from recruiters, basically? Imran, do you want to answer this? I actually, it was similar to Lucky's question, so I thought Imran would be answering it. Yeah. That is why we have him on the call. ना काम करवाएंगे, अभी ज्वाइन किया है तो ऐसे खाली बता भाई. यस तो मैं यही कहूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पेशेंस बहुत रखनी पड़ेगी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि 2 महीने 3 महीने में ही कॉल आ जाएगी. एंड देन सेकंड इज़ बी रेडी. हमेशा अपनी प्रिपरेशन कर उसकी, तो आपको पता नहीं है कि कब कब कहाँ से अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी. फॉर एग्जांपल मेरे साथ जो हुआ था, द कंपनी आई एम वर्किंग इन राइट नाउ, दे लाइक्ड माय पोस्ट ऑन लिंक्डइन. तो वहाँ से मुझे उनके बारे में पता लगा, एंड देन मैं उनके करियर पेज पे गया, एंड देन ऑल ऑफ दैट हैपेंड. बट तो वही है, मैं कहूँगा कि अप्लाई ज़्यादा से ज़्यादा करो. कोल्ड ईमेलिंग बहुत ज़्यादा काम आती है. अगर आप करियर पेज पे अप्लाई कर रहे हो तो बहुत कम चांसेस है कि आपको कॉल बैक आएगी. अब उससे अप्लाई टू hunter.io और अलग अलग बहुत सारी वेबसाइट्स है. वहाँ से आप टॉप उनके ईमेल्स निकाल सकते हो, CEO CFO या फिर जो भी है टॉप उनके मैनेजमेंट जो है, टॉप इंजीनियर्स की. उनको अपने CC में रखो. अच्छा सा एक अपना ईमेल लिखो जो शॉर्ट भी हो और अच्छे से आपको बता भी दे, और उसमें अपना कवर लेटर भी अच्छे से लिखो जो पर्सनलाइज हो उस स्पेसिफिक कंपनी के लिए, कि क्यों आप ज्वाइन करना चाहते हो या क्या चीज़ें हैं वो करो. एंड देन व्हाट आई यूज्ड टू डू इज़, अगर बहुत ज़्यादा बड़ी कंपनी नहीं है तो मैं उनके ट्विटर और लिंक्डइन पे जो भी उनके जो रिक्रूटर या फिर जो CEO वगैरह था, मैं तो उनको सीधा मैसेज डाल देता था, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम रिप्लाई आ जाता था. तो वहाँ से भी बहुत हेल्प हो जाती थी. तो कोल्ड ईमेलिंग इज़ अ रियली गुड ऑप्शन, वो आप कर सकते हो. आई वुड से Okay, यही है सर. so कोल्ड I ईमेलिंग got बहुत my ज़्यादा answer, काम sir. है. Any, anything more? Parvesh, one of the means your main concern was good, but are you looking for a role or what are you trying to achieve? Sir, presently I'm working as a freelancer, I on Fiverr and Upwork, but I Okay, want to have a particular role in a company. So I would be a particular role. I would happy to What work. does particular role mean? Can you So, elaborate? managing servers. I created an Nginx server for a German client. He wants to host his college website for it. So I did that thing, and I actually there are some small type of gigs. I have to manage some AWS servers for that, for the companies, and other thing I have to create a Docker mail server for one of the clients. So it's just basic small gigs. No, my question here is what is the outcome you want? Sir, I want a job preferably remote, and if it's on site, it's not a big deal. But I want to be have a particular role in DevOps culture related to monitoring or managing infrastructure. Then you have to What my focus day. those companies only. See, the problem is, right, Okay. don't randomly apply to companies because that will just add to your numbers. Be very focused and try to network people. And those videos are available on Savinder's Yeah. channel for sure. But also become a bit differentiating person. If you do all the same thing everyone does, what differentiates you from others? See, Imran, if he was from a computer science background and he did the same thing, people may look at him differently. But he's not from a computer science background,
and he has done a lot of things. So people look at him not only for his technical but his grit as well. Now you have done computer science, I assume, correct? No, sir, I'm Yes. from philosophy background. Okay, then even better. Then you need to showcase that you have put in a lot of grit and that you are already freelancing. Trust me, you need to market yourself a bit better. I think you are a bit vague Yes, in sir. how you express yourself. That would be my Savinder, add your view, but I think I'm on the right path. Yeah, absolutely. Yeah, Pravesh, you were saying something? Sir, actually, I want to say, like, in terms of marketing myself, I have created my website also, and it has uh, like one of the posts you says is like go to incognito mode and search your name on it, like see what kind of results that shows up. So I have like a decent public profile, but like I have all my handles there, and like in terms of like showcasing my unique point, so I have mentioned it on my website, like I am from philosophy, but I with my work I have transitioned into it. I am doing freelancing work, I have done some open source contribution. So like, but Guru, the you're thing on is mute. like how many people are going to. Okay, Parvesh, do me a favor. Paste the link in the chat window here, private chat. I will have a look. Okay. And then Okay, sir. ping me on LinkedIn. I'll give you some feedback on what to do. I think we have to be fair with other people. Yeah, Let's go to other people. Thank you so much, appreciated. So All right, Aman, go ahead. Turn on your camera. Okay. Excuse me, sir. Manik this side. Go ahead. I have one more question, sir. What? Sorry, sir. Shirt I कहाँ just गई? want to know. पहले I have a question. Actually, तेरी I have शर्ट a कहाँ गई? sir, हैगी. अच्छा पूछ यार पूछ. मैं तो मजे ले रहा था. Go ahead. Sorry, sir. He Sorry. spoke to Guru for 5 minutes and lost his shirt. Come on, Guru. Well done. No, if I talk for sir, half an मैं hour, it थोड़ा become सा nanga. Yeah. Let's not go No, there. I thought I no, was no, sir. hot. नहीं, मुझे लगा मैं हॉट हूँ, मुझे उतारना चाहिए कपड़े. ये तो ये उतार के बैठा हुआ. देखो लोगों के अपने अपने परसेप्शन है. अभी क्या है? नहीं. अलग ही टाइप का लाइव हो रहा आज. चला ही गया बंदा. यही हूँ. आ गया. अरे इट्स बैक. सर हाँ भाई बोल भाई. एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये था एक्चुअली कि मेरा ना 5 to 6 years का गैप है नॉन आईटी में, मतलब मैं वर्किंग में हूँ. तो मुझे अभी एक्चुअली मैं आई एम नॉट सेटिस्फाइड माय जॉब, सो आई रियली वांट टू कम इन द आईटी. सो मैंने डेवऑप्स की सर की वीडियोस देखी थी, सविंदर सर की. माइक डेवऑप्स की तो क्लोजर. मुझे इट्स हार्ड टू हियर. सविंदर सर की मैंने वीडियोस देखी थी डेवऑप्स की, तो मुझे उससे काफी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि हाँ आई कैन डू, बिकॉज मैं हार्ड कोड, मुझे इतना कोडिंग इतना नहीं है मुझे स्ट्रॉन्ग. तो सर मुझे ये पूछना था कि व्हाट इज द राइट पाथ टू स्टार्ट दिस जर्नी, सो दैट क्या बोलते हैं, मैं जैसे और लोग जो हैं इन इस फील्ड में काफी एक्सपीरियंस हैं, तो मैं थोड़ा सा उस चीज को कवर अप कर पाऊं. कैसे, मतलब क्या क्या सही पाथ रहेगा सर, क्योंकि पाथ ही सबसे Okay, ज्यादा I have to इम्पोर्टेंट है. stop you here. See, Savinder has repeated this answer 5 times in today's video itself, and he has Okay. given clue to how to. My suggestion is, before coming on to this session, go through his videos. You will get far better answers. Okay, and then number 2 is that there is no I'm sure Savinder would also say the same. There is no sure short way. Every person is different. Everyone's situation is different. Everyone's thinking is different. So try not to become Tange wala ghoda. Yes, sir. Yeah, Mohammed has gone through, Imran has gone through a different path. Savinder has gone through a different path. I have chosen a very, very
abnormal path where I decided I never want to be a manager. That's my point of view. That's why I'm saying you need to be happy with your choice. Remember, just going and doing a job may not be good for your career and your health. Okay, sir. Yeah. So think about what you want to do and try to be relevant. Okay, your 5-6 years gap doesn't really matter. If you prove to someone that you are good enough, they will take you. Okay, Okay, I'm sir. going to give something not many people know, that in March I was made redundant. Right? In my 25 years of career, this was the first time I was let go. But my situation was so different than others that my spouse, my wife, she was very happy that I lost my job. And guess what happened? We painted 2 rooms, we changed all the carpet, cleaned up the gardens, did all those things. Of course, I didn't do it physically, but I was present to manage it and do it. Right? And Okay, sir. then my family went to Italy. Now, not many people know I joined my new job on Monday. I'm not going to give the details, but I have got a very good job now. And trust me, I did not apply. It was just a referral. That person called me. The interview was for maybe 45 minutes. 1 hour later, I got the job. So what Okay. you have, how you portray yourself, how you how you put on yourself matters. Don't go for generic views or thing. Don't. You need to focus on your good points. Yeah, only then. Because if you ask generic questions, you will get generic answers which will not be focused, and you will be going in loop. Okay, sir. Savinder ji, Yeah, yours. perfect. ठीक है मानिक, we have to talk to others also यार. Sure, sure. I'll let Thank you you, go. sir. Okay. Okay, Okay. thanks. हाँ जी, अभिलाष. Hello, Savinder sir. Hello, Imran Hello. sir. Hello, Guru sir. So I have been a fan of you like for a long time, and I've been watching your videos right from when you started. I just when I was just also starting in my DevOps. Like currently, as a support. I'm working as a support background. So I've been trying to learn DevOps. So it's been like 5 to 6 months. So around that course, or even I was trying to learn, and I was going through all of your videos and stuff from other content creators as well on YouTube as well. Right now, I have kind of learned the fundamentals of all the tools and resources, and the position I'm in also is like actually it's a very vague position, but I kind of also help DevOps team members and also like do a lot of monitoring using Datadog and Grafana. But like currently, what is happening is like when I'm trying to apply for roles and everything, I'm not able to get any sort of responses, and it's been like I'm kind of blindfolded about what should I do next, or what is happening, or what where I'm going wrong with it. So Abhilash, have you been So I just need you. in this live for the last half an hour? Yeah, yeah. We So I answered this actually, question so in I have different also, shapes and forms, right? yeah, We've already answered this question. yes, yeah. After hearing those answers, But do you have any specific the question? uh, just that like I'm still like as Guru sir said like about framing your monthly goals and yearly goals and about all of this stuff. So I've taken that sort of consideration, but I kind of not able to figure out how to build an actual plan or actual roadmap. The specificities is what I'm thinking that I'm missing of as of right now. My Abhilash, suggestion is okay. yeah, good. See, okay. Now that is what we want, right? Okay. Now, unfortunately, what you need is someone who is a mentor for you, right? Find someone who can mentor you. This may not be free, but if you can find someone who is very experienced and who can mentor you, say that an hour a week or something like that, try to find. But Mhm. find someone who is very senior and recognized in the industry. If you can get Savinder,
no better chance. But I'm sure he's busy with his daughter, so Absolutely. and maybe he's flying. So my suggestion is find someone who's very senior and very experienced and done a lot of things. That way they can and show them what you want to do. You need to decide the what and the why, and then they will tell you the how. Don't expect them to do the what and the why. Then they are not good mentors. Yeah, Okay. I'm going to keep this short Yes. answer. Find someone who will mentor you. You need to find a mentor who will tell you the how based on your what and why. Yeah, Yeah. that's it. It's Yeah. very simple. And Thank find you. other videos Yeah. in his channel who tells you how to network and all those things. And I'm sure you will be okay very soon. Sure. Thank you. Thank you, Okay, everyone. thanks, yeah. All right. Gigi? Gili? Sorry. जी Gigi, okay. हाँ हेलो मेरा क्वेश्चन ये था कि लाइक अभी मैं एज अ लिनक्स एडमिन काम कर रहा हूँ कैमरा ऑन कर L2 ले लेवल यार. पे कैमरा नहीं है चल कोई बात नहीं. Okay, good. तो लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर हूँ मैं एज L2 वर्क कर रहा हूँ सो एंड उसके साथ साथ मैं अभी अजोर भी सीख रहा हूँ सो बेसिकली मेरा क्वेश्चन ये था कि लाइक मुझे डॉकर एंड कुबरनेटिस भी सीखना है ठीक है सो बेसिकली ये डेवऑप्स का जो ये पाथ है उसके अंदर अगर मैं कोई एमएनसी अगर ज्वाइन कर रहा हूँ तो बेसिकली वो कोई एक ही टेक्नोलॉजी देंगे काम करने के लिए बराबर तो बट वो इंटरव्यूज में बाकी के भी पूछते हैं लाइक टेराफॉर्म आ रहा है क्या जेंकिंस आ रहा है क्या एंड बाकी के जो सब टूल्स है वो सो मुझे वो जो बाकी के टूल्स है मेरा मेन फोकस तो डॉकर एंड कुबरनेटिस है एंड क्लाउड सो वो जो बाकी के टेक्नोलॉजी है वो कितने मतलब कौन से मेन टॉपिक्स रहेंगे उसके अंदर जो इंटरव्यूअर्स पूछेंगे तो वो मुझे जानना था बेसिकली Savinder, if you don't mind, Yeah. can I? Please, Okay. go ahead. Sir, what's your name? Gigi, right? Once you said, okay, Docker Kubernetes, I can understand. You mentioned cloud, right? Yes, Cloud yes. has like hundreds of topics. Right? नहीं वो फोकस है मेरा क्लाउड का मुझे टेराफॉर्म जेंकिंस एंड जो बाकी के टूल्स है जैसे कि प्रोमेथियस ग्राफाना एंड ऑल मॉनिटरिंग के लिए और लॉगस्टेप जो अपन ईएल के यूज करते हैं वो उन टॉपिक्स के बारे में जानना है क्योंकि क्लाउड तो मालूम है वास्ट है वो तो मैं और मुझे वो करना है तो मैं वो कर लूंगा बट व्हाट अबाउट दिस टूल्स उसके लिए भी वीडियोस हैं यार बहुत सारे वीडियोस हैं माय सजेशन इज find a tool and find the company's website and then they will have their own social media links. Yeah. And also, as I mentioned, sometimes, as they say, if you want to go fast, do it on your own. But if you want to go long, find a partner. Okay. Yeah. Okay. My suggestion is go and find and network with industry leaders and just don't watch videos. Videos watching is good. I'm not saying don't do it, but that should be only 30 to 40% of what you do. 20% should be networking, and the rest should be of your own learning. Once you start doing projects and once you start doing things, only when you encounter errors, this is where your actual learning happens. And don't only go for example, you're saying ELK stack. Okay. What about LGTM stack? Why do you need ELK? ELK is very expensive. Can you go with LGTM stack? You don't know. So look at those also. So your fundamentals should be very good. Don't be like, I will only create mutton biryani all the time. You need to also know how to create vegetable biryani. I'm sure Mohammad Imran will tell you because he's Imran and I'm sure he likes biryani a lot. Yeah. So make sure that your underlining base fundamental skills and problem solvings are good. Then the tools will come automatically to you. Okay. सेकंड क्वेश्चन आप क्लाउड के बारे में कुछ बोल रहे थे सर्विसेज के लिए वहां पे मैंने आपको कट किया सॉरी फॉर दैट जैसे मुझे अभी लिंक्डइन में बोला सर मुझे मर्न स्टैक सीखना है सीखो कौन मना कर रहा है
मुझे डॉकर कुबरनेटिस सीखना, सीखो, कौन मना कर रहा है? The problem is, again, you are so focused on one thing that you are not concentrating on the fundamentals, that computer science is there to solve a problem by automation. You need to become a very good problem solver. Ask Imran. He's just not writing software for some obvious, like, willy-nilly. No. He's writing code to solve a problem. Yeah, your problem solving skills and what technology to use for what, this is where your skill should be. You should not use an S3 bucket for, let's say, writing a database. Well, technically you can, but you should not. Yeah. So you need to do more practice and go into architecture and look at white papers. Okay. Yeah. And Okay. then decide which technology to learn based on your interest. For example, I will never say that I'm a database expert, but I can solve any database related problems. Yeah. But my expertise are in application development and infrastructure engineering. So you need to decide. And you cannot learn everything. No. Okay. Okay. Thank you so much, sir. All right. All right, guys who are asking questions in the chat, I'm not going to reply anything from the chat. The purpose of this live is for you to come on camera and for us to talk. Chat, I'm anyways replying in LinkedIn comments and YouTube comments and all of that. So no matter how much you cry in the chat, I will not take any question from chat. That has been my rule from day one. If you don't like it, I'm so sorry. That's how it works. You want to ask us a question? Come on the camera, ask us the question. If you're not ready with camera, that is perfectly fine. I understand. किसी ऐसे camera नहीं है. I get that. But no questions from chat will be taken. That's how this works. All right, Aman, go ahead. Good evening, sir. So I just completed my first year in BTech CSC और मेरे जो बहुत से दोस्त हैं वो अभी मतलब वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं और मैंने भी English. Try and speak English. टूटी फूटी चलेगी, कोई I'm not problem नहीं. that good in English. चलेगा. I mean, कोशिश कर. yeah. Okay. वो पर्पस Okay, है sir. इस चैट So पे, इसलिए most of कैमरे पे बुलाता हूँ. अंग्रेजी बेटर हो जाएगी थोड़ी सी बात करके. टूटी फूटी चलेगी. okay, sir. जैसा बोलनी है बोल. Okay, sir. कोई प्रॉब्लम नहीं है. So most of my friends are doing web development, and I also started web development, but I am not interested in that field. I know that. So I started doing machine learning courses. I did Andrew NJ course, which is on Coursera, and I find it quite difficult. So I started now large language models in machine learning. So should I carry on that skill, or I should learn web development as a first year student? My suggestion is concentrate on your studies. Okay, you may be the best program. I'll tell you, I landed in a very good role because of my studies and my marks and your teachers. Okay, I understand you may be in a tier 3 college where campus selection may not happen. Doesn't matter. Yes, sir. Your marks matters a lot, especially in India. Yeah, get good marks, get your support from your teachers. My suggestion is, if you fail in one subject or two subjects in a semester, there is no point in you doing web development because it will be taken negatively. So concentrate on your studies first. And when you are studying, go to as much depth as possible. Don't do superficial work. Yeah? Trust me. Yes, sir. There is a subject called state management in your studies. I was so good at that, I can write code in assembly if I want to be. Right? I can, if I go on COBOL now, within a month I will learn COBOL. So my suggestion is, be very good at your basics first. Don't go to web development because there are lots of tools which will do the thing far better than when you sit and code. But if your engineering skills and computer science skills, the basics are not good, you will suffer a lot in the long run.
So my suggestion is try not to compare yourself with others. If other people are donkeys, then would you like to become a donkey? Obviously not. No, sir. Yeah, and some people are exceptional. If you try to copy like them and if you make your life miserable, no. For example, look at me. Yeah, I was topper in my class in computer science, but in other subjects I was average. Yeah, I'm just a developer. Yeah, there are some people who are vice president, senior vice president in my company or in other companies. I don't compare myself with them. No, I don't give a monkeys. Yeah, so don't compare with others. Be good and do only thing which makes you happy. Would Sachin Tendulkar go and sing songs or Lata Mangeshkar play cricket? No, sir. No, No, they sir. only do what they like. So pick a topic which Yes, you are sir. good at and look at the ecosystem around it and try to learn that ecosystem as well. Yeah? Okay, sir. Okay, done. Yes, sir. All right. Thanks, man. But sir, I have also a doubt that we should have a skill at the end of our degree, because I think Aman, मतलब you have हम 4 years अगर to figure it out. You have time. Relax. Calm down. You have 4 गर्लफ्रेंड है? years to do that. So you figure गर्लफ्रेंड it out. बनाई क्या? No, sir. तो कब बनाएगा? हाँ. सर मुझे तो लग रहा है कि वेस्ट हो रहा है, मतलब मेरा अभी फर्स्ट ईयर भी वेस्ट हो गया क्योंकि मैंने कुछ सीखा नहीं। मैं फ्रंट एंड कर सकता था और हैकाथॉन सेकंड ईयर से स्टार्ट कर सकता था, क्योंकि वही एक एक्सपोजर होता है टीयर 3 के लिए। अरे यार यार तुम रुक लोगों जा को भाई, प्रायोरिटी ही रॉन्ग है जिंदगी में यार। रुक जा यार। कब बनाएगा गर्लफ्रेंड? कब घुमाएगा उसको यार? वो लड़कियां हाँ, देख रही हैं तेरे को, कितना अच्छा हेयर स्टाइल है तेरा यार। फायदा उठा हाँ, उसका। क्या मूछें कर भी रहा अच्छी है। देख तेरी जैसे मेरी मूछें होती तो मैं कहीं का पहुंच जाता। हाँ, क्या हाँ, शर्ट कितनी अच्छी यार पहनी है तुम तूने। लोगों को ये जिंदगी भर जॉब करने की क्यों तुली पड़ी हुई है मालूम नहीं है। यार एक बार जिंदगी के नौकरी लग मजे जाए लूट सर, लो यार। जॉब ठंड नहीं जिंदगी सर, उसका। रिसर्च। क्या? रिसर्च सर, ज्यादा मुझे रिसर्च में इंटरेस्ट है। तो करो ना, कौन मना कर रहा है तुमको। लैब में जाके 24 घंटे बैठो और बाजू में जो बैठी हुई है उसको भी लाइन मारो ना। अरे यार तुम लोग की ओके साले सर। ये समझ में नहीं आता वो मेंटालिटी। काम 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 के पीछे क्यों दौड़ रहे हो। जिंदगी वो भी जीने के लिए, काम करने के लिए नहीं। वो भी ढंग से नहीं कर रहे, फिर वो भी नहीं हाँ हो रहा। एग्जैक्टली। हर जगह पिट रहे हो, फिर क्या है वे? हाँ अगली बार लाइव यस में आएगा सर। ना तो ये बताना कि गर्लफ्रेंड पटा ली या मैंने पटाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो हाँ खबर लेके आना लाइव में, नहीं हाँ तो कोई जवाब नहीं ओके देगी सर। तेरे को। हाँ तेरी तो हाँ शक्ल थोड़ा याद रहेगी मेरे जिंदगी की को। प्रायोरिटीज चेंज कर लो यार। माय गॉड। हाउ ये ओल्ड आर सब हो यू सर? जाएगा यार, हाउ 4 ओल्ड आर साल यू? है। सर 18। बताओ। अबे यार सविंदर, अगर मैं 18 होता तो अभी तेरे ग्रुप में नहीं होता, कहीं और होता मैं। मुझे तो पता भी नहीं था ये सब चलता है जिंदगी में 18 पे। मेरे और बड़े पंगे थे लाइफ Exactly. में। यार तुम अरे लोग यार ना यार, सच्ची में यार तुम लोगों को ना, मेरे भगवान अगर मेरे डैडी जिंदा होते ना तो तुमको बोलते चल मिलके दारू मारते, सिगरेट मारते हैं। हाँ यार, क्या है यार, बहुत टाइम है यार, हो जाएगा। इतना बहुत क्या टाइम स्ट्रेस है, ले रहे बहुत टाइम है। और 4 साल में क्या डिफरेंस होने वाला है। इट विल बी लीप्स एंड फ्रॉड। अभी जो हो रहा है वो कुछ भी नहीं है। 4 साल में आईटी इंडस्ट्री बहुत चेंज हो जाएगी। देन यू हैव टू चेंज योर प्रायोरिटीज। और भगवान करे 4 साल में सविंदर और मैं रिटायर हो जाए। हो। ये ठीक है, ये बात बढ़िया है। हाँ चलो ठीक है अमन। ओके, अभी एंजॉय थैंक यू योर सर। लाइफ, एंजॉय योर एक लाइफ। एक महीने में गर्लफ्रेंड पटा और फिर आ लाइव में, फिर बता हमको, फिर हाँ बताएंगे तेरे को बाकी आंसर। ठीक है सर, डन सर, ठीक है? डन। चल चल। हाँ अभी अभी ये हुआ यस सर। खुशी देख उसकी शक्ल पे अभी। हाँ, पहले आधा खुश रहना घंटा गुरु सीखो ने यार। ज्ञान दिया, कुछ फर्क नहीं पड़ा। एक गर्लफ्रेंड के नाम पे देखो महीने निकल रही है। हाँ यार ओके सर। ठीक है, चलो बाय। हाँ, यथार्थ। सविंदर, बड़ा अभी हम ऐसा करेंगे, अपना टॉपिक चेंज कर लेंगे। हाँ, गर्लफ्रेंड है तो आना है, ऑनलाइन नहीं तो नहीं आना है। हाँ हाँ, ये लव गुरु करते हैं अभी हम, अगला लाइव लव अरे गुरु। नहीं 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 नहीं, वो थोड़ा टॉपिक अलग हो जाएगा। ओके सॉरी। सॉरी, यथार्थ, यथार्थ, गॉड प्लीज। यथार्थ, हाँ। वी कांट We हियर can't यू। hear you, Yatharth. We can't hear you. Good evening, all. Am I audible now? Yeah. यस Yep. यस। Yeah. So I am currently working as a DevOps engineer with 2 year experience in a product-based company. My background is fintech,
but currently I am working in an on-prem environment which does not use any Docker, Kubernetes, or any containerization or the cloud services. We have an external cloud team which operates this on our product on cloud with a multi-service architecture. So I do not have exposure of the cloud containerization. I just do on-prem CI/CD with Jenkins shell script and deploying war on Tomcat. That's it, sir. So how I can move it to cloud or the production exposure? Okay. Havinder, have your popcorn so that I can help you a little bit out. Right. Uh, okay. Yatharth, quick question for you. Are you Yes. very good at what you do? Yes, sir. Okay. How was your appraisal in the last 2 years? Sir, my rating was 3, that is meets expectation. And Yeah. currently we are in the cycle of appraisal. Our cycle is on August, sir. Yeah. So you will get above average, correct? Yes. Okay. That's good. So you are capable. Did you Yes. go to your manager and put what you want to do? No, sir. Actually, the work I am doing, no. So my manager thinks it is not well worthy because in our team, 2-3 members can also do the same work what I do. Hmm. So that is why my visibility is not very clear in the team No, 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 and the no, no, work. no, no. I'm saying is, did you put your see? Ultimately, your manager also has a responsibility to look after your career. Okay. So you need to tell, sir, I'm doing this role for the last 2 years. I am bored. Okay. I'm more than happy to do this role. Mhm. Can you help me do other things so that I become more value? I'm not thinking of leaving the company, no, but I Okay. want to upskill myself so that I can become more valuable. Can you Mhm. suggest me different ways of doing things? Let them decide what they can offer. Okay. Don't go, I Okay. want to work in the cloud team. Don't give Okay. them ultimatums. Managers do Mhm. not like if you give them ultimatums. Okay. So go and tell them, sir, I want to improve my skills. What can I do in the next 3 to 6 months so that I can, my long term career plans is not to do only production deployments. I'm sure you Yes. understand that. And Mhm. ask him in your appraisal and wait for 2 3 months and see if he's doing something. If he or Okay. she does not do anything, get out. Okay. And But I have, remember, yeah. Let me Hmm. finish. Your company is there to make profit. They will only invest in you if they see profit in you, Correct. right? You need to Yeah. upskill yourself. Only you can take care of your career. So, Yes. apart from your 8 hours, see what other people are doing. Try to emulate this in your own infrastructure. Na? Okay, it's going to cost you some money. But the thing is, initiative has to come from your side. If you don't take the initiative, nothing is going to work. Your Yes, company sir. is not like your mom and dad. No, they are there to paying you to do some work. Correct. Tomorrow, if that work is not there, you will be the first person to be fired. Yeah. So your Yes. career development is your problem, not theirs. You need to go and ask, knock on the doors. They should get pissed off so much that they will help you. If they don't, knock on someone else's door. Yes, I sir. I cannot put have it one. more blunt. I cannot put it more I have, bluntly. yes, sir. I have one another question. Like in our Savinder, you're on team, mute. there are. Savinder, you're on mute. Sorry. Yatharth, we'll have to take other questions here now. We have a lot of other Sorry. people Yeah. waiting. Okay. Okay? Okay. Fine, sir. We can talk next Okay. time. All right, guys, let's be a little quick. I have to wind up in the next 15 minutes. So, very quickly, whoever comes on camera. Yeah, Pavneet, go ahead. हेलो हेलो एम आई ऑडिबल Yeah, go ahead. सर आपने पता नहीं मेरे को पहचाना कि नहीं मैंने ईमेल की थी आपको कि आपके 50K पे मैंने मीटअप टिकट की है और मैं आ नहीं सकता Okay. शायद आपको रिमेम्बर नहीं होगा मेरा क्वेश्चन तो ऐसा कोई नहीं है मैंने ना 1 साल हो गया जैसे अभी अमन आया था ना Hmm. और मेरा तो उसका केस थोड़ा प्रॉपर ही सेम है
मैंने 1 साल डेवलपमेंट की, है ना, दिमाग खराब हो गया, तो अभी डेवऑप्स कर रहा हूँ। तो डेवऑप्स लिनक्स शुरू करूँगा सीखना। तो पहले तो यही है कि चैट जीपीटी से पूछो तो वो कहती है कि डेवलपमेंट ज़रूरी है। तो कितना ज़रूरी है ये नहीं कोई बोलता, फुल स्केल जो डिप्लॉयमेंट तक की प्रोजेक्ट जाना चाहिए कि बस जैसा आता है उतना इनफ है। 200-250 ग्राम काफी है। 250 ग्राम मतलब मतलब उतना काफी है। देखो, एज अ डेवऑप्स इंजीनियर आपका one of your primary responsibilities is to deploy and maintain applications, right? So you should know fundamentally how an application is coded, how it is built, and how it is deployed from a developer standpoint. ओके At least one compilable language. ये नहीं कि पाइथन का कोड उठा के डिप्लॉय कर दिया, वो नहीं, राइट? जावा ले लो, .NET ले लो, कोई भी एक ले लो, उसका कोड लिखो, कोई अच्छा एप्लीकेशन, not just a hello world, but a decent application. As long as you can write that, and then you know how development is done, how it is deployed, how it is packaged, how it is built, if the build breaks, which is the developer to reach out to, how to fix the build break. That is why they say development is required. अदरवाइज डेवऑप्स इंजीनियर क्या करेगा? जाके कमांड मारेगा, बिल्ड फट गया तो बोलेगा फट गया। अरे क्यों फटा? इन्वायरमेंट की वजह से फटा? वाज इट अ प्रॉब्लम विद द source code, the environment, your script configuration? Is it a source code change? If it a source code change, who changed it? If possible, can you also suggest the fix? Is it a library problem? All of this you will only understand if you've done deployment development, right? मतलब So, आपको फंडामेंटल्स पता होने, सॉरी पता होने चाहिए, 2-4 ढंग के एप्लीकेशन बनाए होने चाहिए, that is good enough. You don't want to become a developer, but that is the idea of saying you should know development. Does पवनीत that सर, answer your question? पवनीत यस सर, यस सॉरी, यस आपने 12 फैक्टर ऐप के बारे में सुना है? नो सर, सॉरी मैंने नहीं सुना। 12 फैक्टर ऐप करके एक चीज है, उसको जाके पढ़ो। कौन सी ऐप, दोबारा रिपीट करना। 12 फैक्टर ऐप, 12 फैक्टर ऐप, 12 फैक्टर ऐप, ओके ओके ओके। ओके और एक है dora.dev/quickcheck। ओके ओके ठीक है, ये दोनों ना, दे टेल यू व्हाट कंसिस्ट ऑफ गुड डेवऑप्स। एक एप्लीकेशन कैसे मेट्रिक्स को कैसे इवैल्यूएट करते हैं, वो उसके जो बेसिक मेट्रिक्स होते हैं उसको पहले देखो, उसको इम्प्लीमेंट करना देखो। जैसे सविंदर सर ने बोला, एक एप्लीकेशन का जार बनाना तो बहुत इजी है, और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है। आई एम वेरी प्राउड टू से आई हैव क्रिएटेड अ पाइपलाइन व्हिच हैज 10 स्टेप्स। नो, मेरा पाइपलाइन सिर्फ एक स्टेप है, मेवन क्लीन इंस्टॉल, दैट्स इट। उसमें दुनिया भर के प्लगइन होते हैं, वो एक ही शॉट में हो जाता है, क्योंकि 10 स्टेप बनाना इट्स अ वेस्ट ऑफ मशीन। हर बार मेवन का 5 रन करेगा क्या? नहीं, राइट? You don't have to buy let me finish. You don't have to buy the restaurant to have dinner. No. Try to be frugal, try to be efficient, try to become very good and go by numbers. Just मुझे application deploy करना आता है, वो कोई भी कर सकता है। मैं 5 environment को maintain करूंगा जिसका availability 99.9 है, करके दिखाओ, तब आप अच्छे इंजीनियर हो, नहीं तो आप अच्छे इंजीनियर नहीं हो। सविंदर सर अपने क्लाइंट्स के लिए 500 एनवायरनमेंट होंगे, 5 क्लाइंट होंगे, उसका पोर्टफोलियो, उसके नंबर्स, उसका क्या हो रहा है, उनके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, ये सब अंडरस्टैंडिंग करता है वो। और फिर ऑफकोर्स ही इज अ सीनियर पर्सन, फिर वो हमारे जैसे डेवलपर्स को बताएगा कि मुझे ये चाहिए, बट जब तक वो नंबर समझ में ही नहीं आएगा कि वो क्या बोल रहे हैं, यू कांट इम्प्लीमेंट एनीथिंग। या So you need to understand the basic metrics and the basic fundamentals pehle, right? Try to run before you try to cycle. Yeah. Go ahead, Savinder. No, I'm done. Yeah. और मेरा ना एक, जैसे मेरे जो सीनियर्स और बैचमेट्स हैं ना,
वो लिंक्डइन पे पोस्ट डालते हैं चैट जीपीटी से लिखा के इतना लंबा लंबा, तो फिर वो ना होता है कि जैसे 1 साल निकल गया, मेरे पास तो कुछ पोस्ट करने को है ही नहीं, वो सर इतना लंबा आपको लंबा क्या लिखते हैं। लगता है कि घंटा फर्क नहीं पड़ता उससे? लेट मी पुट इट दिस वे, घंटा फर्क नहीं हमको। हम लोग जो सीनियर्स होते हैं ना, उनको समझता कि कौन से चैट जीपीटी से रिलेटेड है। आई एम वेरी प्राउड टू से आई हैव लर्नड गिट, घंटा फर्क नहीं पड़ता मुझे। चैट ओके, जीपीटी थैंक यू की सो एक अलग बदबू है, हाँ राइट? वो पकड़ी जाती है, हाँ ठीक है? उसके ऊपर लेके जब तक अपना स्प्रे नहीं ना मारा हो, उसकी बदबू आती है, वो दिख जाती है, एग्जैक्टली। ठीक है? वो बहुत ज्यादा थैंक यू सो मच सर, बोथ, नो थैंक यू सो मच। इमरान क्या कह रहा था? मैं कहता कि वो बहुत ज्यादा इरिटेट भी करता है अगर आप बहुत ज्यादा चैट करोगे अपनी कॉल। ओके, दिनेश, गो अहेड प्लीज। दिनेश, you're on mute. Yeah. So hi sir, hi all. Yeah. So my question is, so currently I am having an experience of 5 years in AWS Cloud, Azure, and GCP DevOps, and due to lack of projects in my current organization, so I might get layoff. Okay, so what do you think that how many months of gaps would be fine to would be enough to find new job? Okay, layoffs. I'm the best person to talk about it. Okay, yeah. You have 5 years experience. I have only 25, so we are on round about the same plate, I guess. Number one, you cannot do any guessing. Whatever you are guessing doesn't matter. You may say the best gap will be no gap, but if you will find a job, you will not have a gap. If you do not find a job, you will not have you will have a gap. So it's not what you decide; it's what market and conditions decide. And number two, you itself has told me that you have not done very good projects. What you have done is okay-ish projects. That's your mistake. Yeah. You said you have done some work in AWS, Azure, and GCP DevOps. Why only DevOps? And including DevOps tools as well, like EKS, Terraform, and Concosia, stuff like that. So I have worked Okay, on many yeah. projects. Yeah. But see, my view is layoffs are not normally only because of technical skills. If that was the case, my company would never lay me off, right? It's what value you bring. For example, some of the people who were fired, they were far even better than me. So there is a lot of things which matters. For example, if you are the most paid, then chances are you will be fired first. Okay. So what value you bring, what we call dollar value. If you are paid $1, if you don't bring 2.5, chances are you will be fired. Number two, how much of your work is visible within the company and your clients. Number three, what are the metrics you have worked against? Have you improved? Just doing your job is not good enough in the industry. Yeah, how much value and how much I assume you're managing a team, correct? Yeah. Yeah. Then what does your team think about you? Have you taken a 360 feedback? Yeah. And what do they say? All are positive. All are positives. Not great though. You're only saying positives. So it's not great. You make it great. My team members, I'll tell you, for people who I interviewed for going into my team, they said to the talent acquisition, if I'm going to work in Guru's team, I don't want to negotiate my salary. Right? And once they joined my team, none of them left. None. From having an attrition rate of 30, it became almost zero. Not because they were not getting their jobs. No. Because the way you treat them, how you build up the value you bring. If you go to your manager and say, sir, हमारा attrition rate 30% था, अभी मैंने इसको zero कर दिया ना, they will never let you go.
So it's not only you becoming better, you becoming a good contributor and bringing up better value to what your role is, and try to do your manager's role as well. Take half the stuff he does, then you're bringing more value, or else nothing is guaranteed. All right, Ravinder sir. Dinesh, got your answer? Yeah. Okay, thanks, There you man. go. Thanks. Okay, I guys, think 10 more Karthik. minutes. Yeah, Karthik. 10 more minutes. We have to wrap up. Yeah, Karthik, hi. please make it quick. Yeah. Yes, yeah. Last, I was working as an identity IAM engineer previously. So from past 1 year, I'm into application support. So okay, my doubt is like, what is the operation side in DevOps, and what is this application support that I'm doing? So I make sure the application is up and running. I check the logs. If there is an issue, the client comes and just tells there is some issue with the file, it is not processing. I check the logs. I message the developer. They will do a release. The release and all. There are around 10 servers, I think, Red Hat servers. Our team do the release. Use this gmake build, release, update, and all. So it is nothing like fancy cloud and all. So it's just basic thing. So what do DevOps like in the operations work? Like, do they monitor that application? Like the logs and all, do they monitor? And like I what is don't my job? Like I'm see. confused. That's what I'm coming from. Karthik, Identity and access management. Yeah. Karthik, I have to Yeah. stop you here. Yes. I think you're Savinderji, of course, correct me if I'm wrong. Yeah. I don't think so. This is the right forum to ask those questions. I may Okay. be wrong. Is this not operations like supporting an No, application, pushing the software in the servers? No, this no, is different. no. My question, Okay. So my this forum is to be very okay. generic. It is not specific to how one company works or what you do. See, No. Like what? in general, I was asking. That's it. Like, Yeah. See, is this something related to operations, DevOps operations, or? Karthik, hang on. See, these Yeah. kind of answers you can get from ChatGPT. You don't have to Yeah. wait Okay. for the live to get these answers. Yeah. Right? Yeah. It's a Sure. fairly Okay. generic question. You Google it, you Yeah. ask ChatGPT, Claude, you'll get these answers. Mm. This is for Okay. specific issues where you are stuck, where you can't find the answers, where you need to talk to some experts. That's the purpose of Okay. this chat. Okay? Okay. No issues here. Okay. Okay. Thank you. Thanks, guys. Hello, sir. Hanji, Praveen, go ahead. Sir, my cam is not working. Is it okay? I can talk? Yeah, go Yeah. Okay. Sir, I am a BTech. I am pursuing BTech in cybersecurity, and currently I am entering third year. Sir, I came across DevOps around 4 to 5 months back, and I have basics of Git, Docker, and Kubernetes. But in future, I want to get into DevSecOps. But I am confused that how much DevSecOps is of security or DevOps skills. Which should I focus more on? Is it 50-50 or So, what is your what are you learning in your course? sir in cybersecurity? Sir, in cybersecurity, till now I have learned about network security, and incident response and redressal, and SOC. This So, much I have okay. learned And about more than intermediate level. is this a degree? Engineering Yes, sir. degree? Yes, sir. Yes, sir. So it's a 4-year engineering degree with a specialization in in cyber security, right? Sir. And what year are you in now? I just entered my third year. You're in the third year. Okay. So by now, do you know that do you want to create a career in cyber security, go into things like malware detection or threat analysis, those kind of things, or do you not like that field and you want to do something else? Sir, I have interest in network and network security. That field I want to go. And aside from that, I have also developed an interest in DevOps and DevSecOps in the recent 4-5 months. Okay, so let me simplify this for you. So cyber security
is a very broad field, right? It covers everything from network layer to application layer to malware detection to threat protection across all layers. It's a very, very broad field, right? Now, DevSecOps is focused on DevOps with security embedded in. Because if your pipelines, if your application deployment is not secure, then anybody will penetrate and it will beat the whole purpose of deploying your application, right? So DevOps as a field will apply the principles of security in doing whatever it is, but the specialization is not on security, right? There will be a security team in organizations which will define the security standards, the parameters, blah, 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 and the DevOps folks will implement it. Also, they will make sure the security is hardened from an infrastructure, from an application, from a cloud, from a gateway standpoint across the vertical stack. But they are not experts in defining the security. That is defined by separate teams in the organization. Okay, What you so have to that's figure what I out, have confused. yeah, what you have to figure out is where is your interest? Do you want to go into, let's say, a quick heal kind of an organization which specializes in cybersecurity? Or do you want to go in allied areas? That's what you have to figure out, and then you can find the right company for that. So Okay. my ultimate goal is DevSecOps, but both the field are so vast that I was confused that which should I focus more. Okay. You got the answer now? Yes, sir. Thank you. Hello. All right. Yeah, Praveen. Good Okay, evening, last sir. 6 minutes we have to wind up, guys. I really have to go. Uh, Yeah, Praveen, Good go ahead. evening, sir. Good Sir, I am the student of Tier 3 college, and I am starting DSA, just started, and I have seen your video to learn in public. So I want to know that I have started DSA. So how I can do it in learning in public at my LinkedIn? If I should do it or not? Yes, you should do it. How to do it? Watch that video again. It has all the answers. Sir, I have seen that video, but I am little clueless how to post about DSA questions. Like if I have an array question, how to approach and how to write an approach, because I am new here and I do not having any guidance. That's why. If you could guide me a little bit, that will be helpful. So, Praveen, I will not spoon feed. Okay? You will not get specific answer. There are 10,000 things you can do on LinkedIn. Apply your brain. Watch that video again, understand the concept of that video, and Yes, sir. start posting. 4 पोस्ट गलत भी लिख दी है, लिंक्डइन वाले बैन थोड़ी कर देंगे तेरे को कि क्या बकवास लिख रहा है. कुछ फर्क पड़ जाएगा? नहीं सर. नहीं फर्क पड़ेगा ना, राइट? ऐसे स्पेसिफिक आंसर दुनिया में कभी नहीं मिलेंगे, मैं भी नहीं दूंगा, राइट? वीडियो बना हुआ है, देखो, ट्राई करो, 2-4 पोस्ट डालो, समझ में आएगा, करना कंटिन्यू, किसी और के पोस्ट डालो, लोग और कैसे लिख रहे हैं, फिगर इट आउट, राइट? ये स्पून फीडिंग वाले आंसर नहीं मिलेंगे यहाँ पे. No, sir. I was little confused because your example was about DevOps, and I do not have knowledge about DevOps. That's what That's I'm why saying, I was buddy. confused. Don't watch the video exactly for the content. Understand the concept I'm trying to explain. Before I get into that, I explain the concept. Pick that. Otherwise, I will make 200 videos on how to post on LinkedIn. Right? You can't do that, right? Use Okay, sir. थोड़ा सा लगा लो, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा. ठीक है? Okay, sir. Okay, thanks. All right. ओह, Hello? रॉयल श्रीवास्तव जी. Yes, sir. अरे सही है यार, चेहरा तो दिखाइए जरा रॉयल्टी का. सर एक्चुअली अभी नहीं दिखा सकता, रूम में और भी लोग बैठे हैं, दैट्स व्हाई. अच्छा, चलो कोई बात नहीं, बोलिए. हाँ सर, so my question is currently sir I have completed my 4th year of college, so I know Node.js, and I want to go in backend development, and what I'm currently thinking is actually learn Golang for backend development. So I just wanted to know, is there any scope in in India for backend development in Golang? Should I go and learn its ecosystem? Currently, at the place I stand, I am like you can say
intermediate in Node.js development, so I understand about a programming language, what are its ecosystem, why And should not use this language and that language. are you studying So right now? Are you working? no, I'm not working. My 4th year is completed. Uh, 4th year is completed. yes, sir. Okay, so and what course did you do? Sir, BTech CSE and with specialization in AI/ML. BTech CSC में? And have you managed to crack any internships, any jobs, anything? Sir, previous year I did a Red Hat internship, which in RHCSA basically, and after that, sir, no, sir. That is a Currently, certification. That's not an internship. yes, sir. So after that, I haven't cracked any internship yet. So Focus on getting a job, na? How does this help you? Should I do Golang? Should I not do Golang? How does it matter? Your goal is to get a job right now. You've completed your engineering, you don't have a job. Correct? yes, sir. Yes, sir. Right? Then you have to do whatever it takes to land a job. We've been answering this question 20 different ways in the last 2 hours. How does your question is incorrect? Question is not should I learn Golang or not. You should watch Okay. this video again. Your goal should be to get a job as fast as possible. Not the best job, not a remote job, not a job in the United States of America. Get a freaking job. Get the first job, then get a better job, then get your dream job, then think about a remote job. सारे इमरान जैसे पागल नहीं होते जो पहले से ही रिमोट ले लेते हैं, नहीं होता सबका, Okay, sir. है ना? तो पहले Yes, sir. नौकरी ले यार, छोड़ ये सब. जहां फास्टेस्ट मिलती है वहां से ले. टाइम निकल गया ना भाई, अभी खत्म हो गई ना 4 साल, नहीं है ना नौकरी अभी. Yes, sir. घर वाले कब तक बिठाएंगे ना? हाँ. हाँ, तो गलत क्वेश्चन आस्क मत कर, नौकरी ढूंढ अभी, फोकस कर उधर. Okay, sir. Okay, Farooq. Yeah, hi sir. Go ahead. Yeah, sir. My currently USA में like I'm Okay. about to complete my master's in like 2 months. Which So the city are thing you is, in? like it is New Jersey, Jersey Okay. City. Yeah. What's your question? Yeah, the thing is that when I was in like India, I worked in TCS for 2 years as a software testing. So after I landed in USA, I have learned like Azure and everything, sir. Like from scratch, Azure and other technology. But I have created lots of resume. I changed my projects and I have applied, and I'm not getting any response from that. My question is like that. I want to like focus on like more clouds, or I should put like projects, or what kind of stuff I need to do that. Farooq, how long have you been in this live? How long have you been listening in? Huh? How long have you been in this live session? For how long Yeah, have you joined? yeah, like in DevOps and cloud, sir. This live session, how long have, when did you join? Oh, like it's about 30 minutes 30 more. minutes. Yeah. I would recommend go watch this full session. We have answered this question at least 5 times Okay. in different shapes and forms. Yeah. And another thing is like you told, like I saw your like last video about manifestation. It works. Yeah. Like how to that, like how should I practice that, sir? Like I've said that is what I said in the video, na? yeah, What is the I believe in that. question? Yeah, my question is like I need to focus on like all the cloud technologies. I should focus on like particularly Azure. Farooq, listen. Yeah. For that question, watch sir. this live stream again. We have Yeah, answered yeah. this in 5-6 different ways. Okay. Second question, how do I practice manifestation? Same answer. Go and watch that video Yeah. again. Yeah, sure. Do you have a specific question for me? Yes or no? Specific question is not no, sir. Then next live happens every 2 weeks. If you have a Okay. specific question, come back. We will answer. Yeah, sure, sir. Perfect. Okay. Thank you so much. Thank you, sir. Have a good one, sir. All right, guys. Thank you so much. I have to really leave now. Perfect, guys. See you 2 weeks later. Savinder, have a good flight. Take care. And you are flying directly to Doha and then to India? Yeah. You are in New York, where you are?
I'm in Atlanta. Atlanta. Okay. ठीक You're है. flying which flight? Qatar. Virgin Atlantic. Qatar. Okay. Okay, man. Have a safe flight. Sure. Thank you. Bye, guys. See you. Bye.